Demane, a very good morning to all of you. Am I audible? Once again, I'm asking. Kindly respond so that I can start the class from here. Okay, clear. Okay, thank you. So, well, we are going to start this class. So, I think the group chat is visible for everyone. Okay. So, a very good morning once again to all of you. This is Devasis Sahu, lecturer in Botany, and I welcome you all to the DHS sponsored online academic support program, which is for basically NEET and JEE aspirants. So, today in this session, we are going to discuss about the last topic of our 12th class, 12th syllabus, that is ecosystem. This class is scheduled to be happened in the Thursday, but due to some internal issues, so we are going to take this class before time. So dear students, today we are going to complete this chapter, that is ecosystem, and let me tell you why this chapter is important for your preparation. Because this chapter has three important key roles in your preparation journey. First of all, it is going to be asked in your uh, examination, which you are going to supposed to give the examination in the March of this 2026 in your council examination. The council into बहुत सारे question as well संभावना रहुची. Number two is in of course in your NEET exam entrance examination, and number three वो पर्सनली बहुत टाइम देखिए कि जो प्रैक्टिकल कॉलेज रे जो हेता है प्रैक्टिकल और 2 मार्क इन 15 मार्क प्रैक्टिकल रो 2 मार्क गोटे चाहिए तुम्हार भाइबा बस और ये जो भाइबा बस एग्जाम टी हेता है तो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो क्वेश्चन पचार थांदी a lot of questions are being asked from this ecosystem, population, and molecular biology chapters. The ecosystem रे तमर तीनटा importance रहइबो. Number 1 importance रहइबो कोठी ना तमरा of course तमर theory exam तमे जो दबाको जाउछ annual higher secondary education HEC 2026 so to a chapter do you can expect around 4 to 5 mark questions. But and the entrance examination देखियो every year if you go to the graph, every year we are going to get asked some 2 to 3 questions from this chapter compulsory. And तुम्हारा भाइबा बॉयस से बेटा तुमको हेल्प करिवो जोटा तुम जनवरी मास जो एग्जाम दबाको जाउछ किछि बेसिक डेफिनेशन आसीबो किछि की कांसेप्ट्स आसीबो and you have to answer this question. So my sincere request to all of you to kindly stay tuned till the last of this class. And in this 2 hour comprehensive class, I'm going to discuss it all about the ecosystem, the productivity, the energy flow, and of course the decomposition. Done. So without wasting any more time, let's quickly begin this class. And here we go. As you can see in the screen, dear students, you can see the definition of ecosystem. So you can see two things in your slide, in your screen right now. One is a pictorial view and second is in a written format. So let me first read the written format for all of you that an ecosystem is a functional unit of nature where living organisms interact with each other and also with the physical environment. So let me clear this thing कि जेमती हमें स्कूल ले पढ़ितले सेल विषय that cell is the basic structural, functional and fundamental unit of life. जेमती हम body we are an organism और organism माने theory कहा कुने कि group of cells कुने की जो सेल थ्योरी हम सुनितले स्लेडिन एंड स्वान प्रपोज करले सेल थ्योरी कि all living organisms are made up of cells and product of cells. तो जेमती सेल हमर फंक्शनल यूनिट सेल हमर स्ट्रक्चरल यूनिट सेमती जो इकोसिस्टम अछि it is the functional unit of nature. जो nature जो biodiversity शो करती तार functional unit हमें कहाँ कहिबा ecosystem को कहिबा where the living organisms interact each other and also with the physical environment. You can see in the picture it's a structure of the pond ecosystem but the grassland ecosystem side रे भी तम देखि परिबो सेपटे बड़ बड़ ट्री भी अछंती जेटे हमें कोन होचे ना गोटे बायोटिक आ गोटे अबायोटिक.
both are interacting. So biotic भी interact करछंदी किए तार से producer हबो किए consumer हबो they are biotic और again से biotic तार external environment जो अछि water हे गला then soil हे गला बा सेठी air हे गला से abiotic component माना सहित भी से माने interact करछंदी and this interaction जो अछि that is the functional unit of nature which we call as ecosystem. Then so I hope समस्त definition समस्त जो fundamental part ni बुझी पारथिबो ecosystem कौन बोली. And in today's class we are going to discuss about these four basic components, that is the productivity, the decomposition, the energy flow and the nutrient cycling. The nutrient cycling part is already removed from a syllabus as per the latest NTA guidelines. तमरा +2 कोर्स वर्क रू भी आउ तमरा एंट्रेंस कोर्स वर्क भी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पार्ट कटि जाइछि जोटा कि मेजरली ताको कहा को डिस्क्राइब करतले अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल से पार्ट कटि जाइछि. बट we are going to focus more on the first three topic, that is productivity, that is decomposition and that is energy flow. तो मु तम माना पई किछि क्वेश्चन आंसर राउंड रे प्रिपरेशन करिछि जोठी हमें गोटे टॉपिक बुझ सारला पर से टॉपिक रिगार्डिंग वी आर गोइंग टू आंसर सम प्रीवियस ईयर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चंस. से क्वेश्चंस हमें देखिबो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंगली ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस एंड गेट अ comprehensive idea about this topic. So first of all, what do you mean by productivity? ये word productivity माने होची कौन? Now you can see in this picture, there is a bright sky. सेठी कौन अछि गोटे green leaves टी अछि. और सेठी sunlight जो आसुची से sunlight से green leaves पे पड़ुची. So using the sunlight, plant जो अच्छे से it can prepare its own food. You know plants are autotroph in nature. And what do you mean by autotroph? Autotroph माने किए ना those who are able to produce food, those who are able to synthesize their own food by themselves, they are called as producers. And जो green plants माने अच्छे they can produce that food. और जो से माने प्रोड्यूस करूछंदी आ देन से प्रोड्यूसर मान को यूज करके हम एनर्जी फ्लो हो जे इकोसिस्टम रे तो से जो जिनसटी बनिला ताकू हम प्रोडक्टिविटी बोली कहूचे. तो से माने केते जिनस प्रिपेयर करले देन सेठू केते कंज्यूमर पाखु पासन होची केते एनर्जी पासन होची. तो व्हाट इज देयर ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज देयर रेस्पिरेशन लॉस एंड एंड रे हम पायो जिबा व्हाट इज द नेट प्रोडक्टिविटी रेट से माना पई आसीबो. देन सेकंड पिक्चर तुम देख पारथिबो कि गोटे एमती सुखला पत्रटी जगह पड़ी रही. तो हैव यू सीन दिस थिंग कि जो गछ पत्र सब पड़ी रहउची तो ईच ईयर से पत्र माने एकाठी हिंदी पड़ी रहंते it can form a big mountain. But have you seen any mountain in the jungle? जंगल में कोई माउंटेन हवा देखियो कि पत्र माने पाइल अप हे कि गोटे जगह एकाठी कि गोटे माउंटेन बनेबार केबे भी हेई नथिबो. काहे कि एमती होइनी? बिकॉज गछर जो पत्रटी तळगु पड़िछि से डिकम्पोज हे जाय, से जमा हे कि रुहेनी. ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଛର ଫଲେନ୍ ଲିଭ୍ସ ଟି ଆସି ପଡିଛି ସେ ଗଛର ପତ୍ରଟି ଆସି ଶୁଖିକି ପଡିଛି ତାର senescence ହେଇଯାଇଛି, accession ହେଇଛି ଗଛର ସେ ପାର୍ଟି old party remove ହେଇଯାଇଛି and when it is placed in this ground ତ ସେଠି ଆସିଗଲେ କୋଉମାନେ detrivores, they will come to the process and ସେମାନେ ତାକୁ ଅବିକା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଡିକମ୍ପୋଜ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ. ସେ ଡିକମ୍ପୋଜନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟପିକ ଆସିବ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଆସିବ, କୋଉ କୋଉ ଷ୍ଟେପ ରେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି we'll discuss in more details. Just to give you a sum up idea कि जो decomposition होଉଛି आ द्वारा कौन होଉଛି ना ଆମର इकोसिस्टम रे हम नेचर रे गोटे बैलेंस मेंटेन रहउछ. तमे केबे भी देखिबोनी सब बेले सिजनटी गदा हे कि रहउथिबो बा असना कि रहउथिबो तो हमर एक क्रिव अछि ता पछे तो सफा करिया पई कि जेमति कि हमर अर्थवर्म हे गले जा काम होला कोन करे ताको भांगीबा फ्रैगमेंट करिबा जो हार्ड कॉम्प्लेक्स अछि ताको बिका सिंपलीफाई करिबा टियर करिबा चिरी कि ताको माटर मिसेबा. देन किछि फंगस आर देयर, किछि डेट्रिटस आर देयर जो मन ताको खाइ कि मिसेबे सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म यू नो that is called as the who depends upon dead and decaying organism, dead and decaying matter. जो saprophytes माने हे गल सीधा डिकम्पोज करे स्टार्ट करिवे. एंड थर्ड असला कहा पता द एनर्जी फ्लो. In the energy flow segment what you are going to see कि how this pyramid is occurring, how this flow of energy is occurring from producer then to consumer and then to decomposer. केमते एनर्जी फ्लो टी होची सबले देखुथिबो कि एनर्जी फ्लो जो होची सेटा एनर्जी फ्लो रे हमर बहुत सारा क्वेश्चन आसीबो. इट कैन कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर. जो एनर्जी फ्लो कांसेप्ट अछि एवरी ईयर वी आर गोइंग टू आस्क वन और टू क्वेश्चन फ्रॉम दिस एनर्जी फ्लो चैप्टर. किछि न्यूमेरिकल भी आस परिबो टू आ किछि फैक्चुअल क्वेश्चन आसीबो.
The first thing first, तुम्हारे जो NEET entrance examination तुम्हें appear करने को जाओ, there will be no subjective questions. Only purely objective questions are there. And the questions are formed in two ways. One is a factual question, second is a conceptual question. In the factual question, what we're going to ask is who named this, what it is called, what is the function, what kind of bond is present here, ये relationship कौन अच्छी, ये the fact question. If I ask you who is the Prime Minister of India, Mr. Narendra Damodar Das Modi is the Prime Minister of India. Is there any mechanism behind this? A question is mechanism अच्छी? No, it's just simply a fact. A factual question ଆସିବ but in conceptual question ସେଠି କଣ ହେଇଥିବ ନା ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଉ ଚାପ୍ଟର ସହ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ ହେଇଥିବ ଲିଙ୍କ କରାହେଇକି ତା ଭିତରେ ମେକାନିଜମ ପଚରାହେଇଛି କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷଟି ଏମିତି ହେଇପାରୁଛି ପାଇନସ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ କାହିଁକି ସାଣ୍ଡି ସଏଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ why they withstand high temperature humidity ତା ରିଜନ କଣ ଅଛି ଏ ଡେଟ୍ରିଟସ୍ ମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି what is the mechanism what is the difference between catabolism and fragmentation what is the difference between leaching तो ये जो पार्ट सब आसीबो कॉन्सेप्ट को हमें दिबा से कॉन्सेप्ट रो डेप्थ को गले हम त मेकानिज्म को बुझिबा ग्राउंड रियलिटी को देखिबा और सेटु आसीबो तमरा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ए टाइप रो क्वेश्चन देथियो जहां पे तमे देखि कि तार जो ठीक ऑप्शन को चूज करियो पड़िबो तो ये हो जो ओवरऑल सिनेरियो इन दिस ओवरऑल सिनेरियो आई गोइंग टू ask two type of segment one is a factual second is a conceptual both question a chapter as paribo so stay tuned to the last of the class and let's quickly begin from the first point that is called as productivity then so exactly what do you mean by productivity you can read in the slide and a जो पार्ट टा हाइलाइट ହେଇଛି ବା जो पार्ट को हमें रेड कलर रे शो करछे दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट से पार्ट से डाटा दियो मन रखिबो काहे ना आगु जो क्वेश्चन आछी दिस क्वेश्चन आर गोइंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेगमेंट so all clear till now the students all clear till now any doubt or okay then you can see solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain. You know, sun is the ultimate source of energy. हम जितने भी एनर्जी हम पाखु आसुची तार अल्टीमेट सोर्स होचने सन जाओ तुम स्कूल बेले पढुथिबो कि सूर्य सकल शक्तिर आधार ये सुनो तो जिंस मीनिंग कोन ना आमे जो एनर्जी फ्लो होच हम बॉडी रे तुम जानि छ कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड energy can not be destroyed it can only be transformed from one form of energy to another form of energy ना हम से शक्ति को बनै परछे ना हम ताको डिस्ट्रॉय कर परछे we can simply pass on we can simply transform from one form to another form तो आमे जो बंची के अच्छे we are called as living organisms and to sustain and to remain active to remain alive what we need is energy those energy which we are getting from our food, from our nutrition. And the food if we are herbivores, then we depend upon purely on plant-based products. If we are carnivores, we depend purely upon the animal-based products. And if we are omnivores, we are depending upon both plants and animal sources for our energy. So again, ये जो animal टी अच्छी, ये जो plant पे depend करती है, तो plant से energy पाउची केमती? Now plant कौन होइछि ना plants are producers they know how to produce food by their own they have a green pigment called like chlorophyll inside the leaves now जो leaves अच्छी leaves are called as the kitchen of the plant ये जो kitchen है से ना leaves रे जो chlorophyll नामक जिनिसटी अच्छी the plastid chloroplast is present here तापर thylakoid membranes अच्छी stroma अच्छी grana अच्छी तो सेठी दी प्रकार रिएक्शन होची one is the light reaction second is the dark reaction in the light reaction someone कौन करछन ना सेठू response करछन dear Lalit don't override बच्चा okay no need to override kindly do not annotate okay the leaves जो अच्छी they have chlorophyll and they know how to produce food तो ସେମାନେ sunlight को utilize करिकी water जो आसी ground level ताको break down करछन and जब water टी break down होची से to remove होची किए H plus ion then oxygen and some electrons
किछि protons, किछि electrons and oxygen. Oxygen as a byproduct is removed from the leaf through the stomata, and then carbon dioxide enters into the story. And here, by utilizing this energy, utilizing this electrons, the say plant तार light reaction ने phosphorylation process रे produce कर दोची high yielding energy source, तार energy currency ता ना हैला ATP, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से बनाई दउची कोन एटीपी. जो टॉपिक मु वर्तमान तम मानक आगे शेयर कली, ये टॉपिक कंप्लीटली बिलोंग करची क्लास 11 को, और क्लास 11 द फोटोसिंथेसिस चैप्टर को, कि लाइट रिएक्शन, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, हाउ एटीपी इज फॉर्म, कारण सी हैला बेसिक. वन से बेसिक पार्ट हे गला, एटीपी फॉर्मेशन हे गला, देन डार्क रिएक्शन ने केल्विन साइकिल ले व्हाट आर गोइंग टू सी, केल्विन साइकिल ले ग्लूकोज फॉर्मेशन हिच. तो जेहेतु we are using energy to make glucose, plant is utilizing energy, plant is investing energy in the form of ATP to produce the glucose. तो से ग्लूकोज को जब हमें बॉडी को नौचे तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएंगे, से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज कन्वर्ट होची. दैट ग्लूकोज व्हेन इट इज गोइंग टू द रेस्पिरेशन पाथवे, जब से ग्लाइकोलिसिस करूची, ब्रेकिंग डाउन होची, we are getting the energy. Clear? The plant जो अच्छी to make glucose, it requires energy. Energy पाउची कोटो from the sun, from the solar energy, from the sunlight. You should know. तो से light energy की utilize करके से chemical energy बनाऊची ATP, NADPH, etc. And once ATP, NADPH formation कर दोची, NADPH plus NADH plus H plus formation कर दोची, then ताकू से utilize करके atmosphere of carbon dioxide, 6 molecule of carbon dioxide, 12 molecule of water, ताकू आपस में मिससे कि it will produce a 6 carbon sugar that is called as glucose. And जेहेतु जिनसे build ହେଇची, it's an anabolic process, and is anabolic process energy is utilized. जब से anabolic process से मिलित हुआ ग्लूकोज का हम बॉडी को नौचे, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करूचे, सेठु हमें एनर्जी रिसीव करूचे. तो ए वाला दुपरे गोटे प्लांट रु गोटे एनिमल पाखकु बा गोटे प्रोड्यूसर रु गोटे कंज्यूमर पाखकु एनर्जी टी फ्लो होके आसुची. Clear? The solar energy is the basic requirement for an ecosystem to function and sustain. Amount of biomass. What do you mean biomass? Biomass means the organic matter. जो पार्टी हम बॉडी भीतर अच्छी, जहाँ जे हमको मेजॉरिटी लिविंग पार्टी रखी है, our body is basically made up of 70% of our body is water only, H2O. ता सहित कार्बन कंपाउंड भर्ती है कि you will see proteins, protein अच्छी amino acids, amino acid center अच्छी कार्बन. तो कार्बन अल्फा कार्बन चारटा बॉन्ड बने की रखी गोटे पटे COH, गोटे पटे NH2, गोटे पटे H एंड गोटे पटे R ग्रुप रहला. सेठी आसला कार्बन. लिपिड्स रे आसला कार्बन, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड. So everything is made up of hydrocarbons. Hydrogen is there, carbon is there, oxygen is there. So the amount of biomass, basically the organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called as primary production. पार्ट को तमे जो सेंटेंस का पार्ट पार्ट कर मन रखि परिबो. व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन को बुझिबा, देन वी विल गो टू प्रोडक्टिविटी. The amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis is called as primary production. And it is expressed in weight, that is per gram केते हैला हमरो, और एनर्जी बेसिस, या तो हम वेट बेसिस से देखिबा केते बायोमास आसला, नले हम एनर्जी बेसिस से देखिबा केते किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, कि एते की एरिया भितरे केते किलो कैलोरी जिंस हमें गेन करि पाछे. The rate of biomass production is called as productivity. Remember what is productivity? The rate of biomass production. What is production? ना सनलाइट को यूज करके प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रे जो ओवर टाइम ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करूची, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन, प्राइमरी प्रोडक्शन. एंड द रेट एट व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. देन गाड़ी केती स्पीड रे जाउची और घंटा प्रति केती स्पीड रे जाउची, दैट इज कॉल्ड रेट. जो आसी गला रेट आसी गला, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी को हम एक्सप्रेस करछे केमती ना ग्राम, जो ग्राम इनवर्स और ईयर, और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर. गोटे वर्ष रे हम केते फाइनली पार्टी पाइले. सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज जीपीपी एंड एनपीपी. ए जीपीपी एनपीपी बुझिया पाएंगे तुमको गोटे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन ते देखिया पड़िबो. तो तुम एई वारी देखो, गोटे कंपनी अछि,
से कंपनी एंटायर ईयर कंपनी गोटे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अच्छी से गोटे जिन प्रोडक्ट जिन बनाऊे सपोज लेट्स टॉक अबाउट एली लिली यू ऑल नो बायोटेक एप्लिकेशन पढ़ी रिवाइज कर दउची बायोटेक एप्लिकेशन ने गोटे अमेरिकन कंपनी ना कहली इन 1983 एन अमेरिकन कंपनी नेम्ड एली लिली से फर्स्ट टाइम पे प्रोड्यूस कला कोन ह्यूमुलिन ह्यूमन इंसुलिन जहाँ आम यूटिलाइज करछे बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो डायबिटीज मेलाइटस केस रे बा हाइपरग्लाइसेमिया कंडीशन केस रे लोक मानको इंसुलिन जाउची एंड इंडिया बीइंग द डायबिटीज कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड तो ये बहुत लोग एमती अच्छे जो मानको डायबिटीज होईची एंड से माने डायबिटीज पाई की रेगुलर बेसिस रे इंसुलिन इनटेक करछन्ती देन सिरिंज रे इंसुलिन इनटेक करछन्ती ये जो इंसुलिन कंपनी अच्छी जो फार्मा कंपनी ना कहली एली लिली तो से ईच ईयर केते अमाउंट रे इंसुलिन बनौची आउ ताकू के जो बिक्री करूची दैट इज कॉल्ड एज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो प्राइमरी केस रे से ग्रॉस केते जिंस बनैला केते टंकार बिक्री से कला जिते टंकार से बिक्री करछि जो रेवेन्यू कमैछि बट सब रेवेन्यू का प्रॉफिट रे जीव की ना कहीं ना से जो जिंस बनया पई कि मैन्युफैक्चर करिया पई कि ताको ऑपरेशनल कॉस्ट लागिथिबो केते मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देन एम्प्लॉय मानक सैलरी देन तापर किसी बोनस रहइबो कंपनी किसी लायबिलिटी थिबो कंपनी जदी किसी लोन एंड लोन पैसा सपोर्ट दबो देन ये सब जिंस जदी माइनस करिबा माने हमर रेवेन्यू केते जनरेशन हेची रेवेन्यू जनरेशन कर सरला परे हम केते केते पार्ट काहा को देले जेमति कि कंपनी रो सैलरी स्ट्रक्चर केते गला कंपनी रो बस फेयर तार इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट केते आसिला से जो मशीन माने किणाई से मशीन रो इन्वेस्टमेंट केते हेतिला लोन केते आसिला ता पे केते लोन डिस्बर्स कराइची सब पार्ट को माइनस कला परे जदी किछि अमाउंट बढुची दैट इज कॉल्ड एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट्स लाइक तुम्हारा सेलिंग प्राइस माइनस योर कॉस्टिंग प्राइस जदी सेटा पॉजिटिवली आसिला देन यू आर गेटिंग प्रॉफिट जदी से नेगेटिव आसिला यू आर गेटिंग इन लॉस द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा को बुझुची प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तुम केती रेट रे प्रोडक्शन करिछ प्राइमरी प्रोडक्शन दैट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगेन इट इज ऑफ टू टाइप गोटेला जीपीपी सेकंड इज एनपीपी इन जीपीपी से को टोटल अमाउंट ग्रॉस केते आसला तुम केते तुम बनैछ सेथिरु तुम जे तुमर माइनस कर दो रेस्पिरेशन लॉस कि तुम से जिंस बनया पई केते एनर्जी यूटिलाइज करछ माने बनौछ ना इन नेचर एनाबॉलिक प्रोसेस कैटाबॉलिक प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलीछि किछि गोटे जिंस बनौछि मन किछि जिंस भांगुछि सेटु भांगिला तो एनर्जी पाइले से एनर्जी यूटिलाइज कर जिंस हम प्रिपरेशन कर देले तो सेटु मन रखियो गोटे फार्मूलाटी इंपोर्टेंट फार्मूला दैट जीपीपी माइनस आर is equal to npp and what is r over here r is called as the respiration loss clear ଆଉ ଏବେ जो नेट प्रोडक्टिविटी बाहरला सी हो हमर एक्चुअल इनकम सी हो हमर एक्चुअल प्रॉफिट जहा को शेयर होल्डर मानक भीतर बंटा हबो तो गोटे कंपनी एलिलिली से तार वर्ष को सपोज लेट्स से 1000 crore से गोटे रेवेन्यू जनरेट करछि आउट ऑफ दोस 1000 crores तार 800 crores गला कोथरे तार ऑपरेशनल कॉस्ट तार सैलरीज तार एम्प्लॉय पेमेंट तार लायबिलिटीज तार इलेक्ट्रिसिटी तार रेंट ए सब माइनस कला परे आउ बचिला केते 200 crores से जो 200 crores डॉलर तार बंजे दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी I hope it is being cleared. So you can see over here, GPP is what? It is the rate of production of organic matter during photosynthesis. If photosynthesis process रे केते organic matter बनिछि that is called as primary GPP gross primary productivity and it is a considerable amount of GPP is used by plants for respiration. The respiration by considerable amount time in but in case of NPP, what it is? Now it is the available biomass for the consumption of heterotrophs, that is the herbivores, the decomposers, etc. That is the NPP is gross primary productivity minus respiration losses. Those things which I am discussing right now, ये जो NPP है, it is the available biomass. कारण गच्छ जो बने ची सबो तो से यूटिलाइज करी बने प्रोसेस बने ପାଇଁ तो एनर्जी दवा पड़ी the available biomass केते रहला for the consumption to the heterotrophs heterotroph को माने असले जो those who cannot produce their own food they have to depend upon others we are the heterotrophs we cannot synthesize our own food we don't have chloroplast we cannot make our own food ultimately we are depending upon the plant source the animal source those plant जो जिनसटी बनै छी सेटु तार production cost minus kala pare respiration loss minus kala pare जोटा बढ़िला that is called as the NPP the net primary productivity this golden rule this golden formula you need to remember NPP is equal to GPP minus R
because questions are going to be asked from this segment. So you need to factual base, you need to remember the equation, and second the tama kichhi numerical padila calculation ପାଇଁ you should know what is NPP, what is GPP, and what is R. Us level second question, secondary productivity. Now it is the rate of formation of new organic matter by consumers. तो जो कंज्यूमर माने रहिले जो मान कंज्यूम करछनी तांकर केते फॉर्मेशन हे परछ बॉडी केते ऑर्गेनिक मैटर बनि परछ. The primary productivity varies in different ecosystem because it depends on काका पे डिपेंड करछि the plant species inhabiting an area, then second the environmental factors, third the availability of nutrients, and four is the photosynthetic capacity of plants. The चारटा पार्ट पे डिपेंड करछि. मु कहल तम माने ए जो क्लास रो केते बेनिफिट पाइबो डिपेंड करछि बहुत सारा फैक्टर ऊपर. फैक्टर नंबर 1, तुमे क्लास टी कोड करछो, you are doing this class from your home or from the office or from the college, तमर हायर सेकेंडरी स्कूल प्रीमिसेस तमे क्लास टी करछो. सेकंड सेठी क्लास कोला बेले इंटरनेट रे कनेक्टिविटी केते अछि, तमे केते भल से जिंसो अटेंटिवली सुनी परछो, देन से जिंसो तमे केते नोट डाउन करि परछो. थर्ड तमर विलिंगनेस, तम इच्छा अछि कि नाही से पाठटी पढिया पई जानिया पई कि. एंड फोर्थ ये सब दिन जानि सरला परे ये कांसेप्ट को ग्रास्प कर सरला परे हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दिस थिंग, तम कैपेसिटी केते से जिंसोटा प्रोसेस करिया पई कि. माने आज रे क्लास तुम पढि देलो, क्लास टाइम रे बुझी गेला, बट व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, तने केम तुम यूटिलाइज करिवो ता पर डिपेंड करछि. प्लस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो अछि ये डिपेंड करछि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऊपर, और सी वैरी करछि इकोसिस्टम रे काहे कि ना डिपेंड करछि द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग एन एरिया, द जो हैबिटेशन से को जगह रे अछि, द हैबिटेट कोन अछि, से समुद्र कूल रे अछि, नई कूल रे अछि, पहाड़ ऊपर अछि, को जगह से प्लांट स्पीसीज. सेकेंड एनवायरमेंटल फैक्टर, से एरिया रो एनवायरमेंटल सॉइल केते फर्टिलिटी अछि, से एनवायरमेंट केमते अछि, से जो केते ह्यूमिडिटी अछि, सेटी मॉइस्चर लेवल केते अछि, वाटर अवेलेबिलिटी केते अछि, ग्राउंड केते लेवल ले पानी अछि. देन थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जरि सेटी कि डिकम्पोजर्स माने नाहंती, सेटी जरि कि सियानोबैक्टीरिया नाही, नॉस्टॉक एनावेना राइजोबियम मेसोसिस नाहंती, तो माने एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फिक्स करै परिबे नै. तो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज बिग क्वेश्चन आसी जिवो. And the last one is the photosynthetic capacity of the plant. The plant by कितने capacity अछि photosynthesis करिया पाइंगे. Then ये चारटा factor पे से माने depend करछन. The annual net primary productivity of the whole biosphere is about 170 billion tons. That in dry weight सबले मन रखिबो, हमें को भी जिन कैलकुलेट करते हम ड्राई वेट रे करते हो. बायोमास जो आसी थाए ताको हमें गुडीटा वेट जोटा फ्रेश वेट और ड्राई वेट. फ्रेश वेट रे कोन होइछ ना ताजरे वाटर थाए, ड्राई वेट रे कोन हम वाटर को रिमूव कर देछे. देन तो जो ड्राई वेट रे हमर केते ऑर्गेनिक मैटर आछि, एनुअल एनपीपी ऑफ द होल बायोस्फीयर इंटर बायोस्फीयर माने बने सारला परे जीपीपी माइनस आर जो एनपीपी बनेछि, तो एनपीपी वैल्यू के दैट इज 170 बिलियन टन्स of organic matter and dry weight. And of this, despite occupying 70% of the surface, the productivity of the oceans is only 55 billion tons. मन रखियो पार्टी हमर अर्थ रो 70% किए रिसीव करछि, 70% नेछि केवल ओशन. देन 30% लैंड अछि. तुम देखबो ग्लोब डायग्राम में देखैछि जो ब्लू पार्ट देखा जाउछि, ब्लू पार्ट होस हमर ओशन वाला पार्ट. तुम इंडिया को देखो ना, इंडिया तीन पटे देखो ना, इन द ईस्ट कोस्ट तुम पाइगला कहा को बे ऑफ बंगाल, in the west you will find the Arabian Sea, and in the southern part you will find Pacific Ocean, sorry Indian Ocean. तो गोटे पटे बंगोपसागर, गोटे पटे अरब सागर, गोटे पटे इंडियन ओशन भारत महासागर, चारि पटे हम घेरिकी रहिछि. तो ये 70% ये रखिथिले भी हेले द प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहिबो 55 बिलियन टन्स. यू कैन आस्क मी व्हाई सर, व्हाई दिस इज हैपनिंग in case of grassland ecosystem or in case of forest ecosystem, tropical rainforest and सब अधिक productivity आसुची. But in case of ocean, despite of having a big number, huge spread, कहीं केते कम तो सेठी productivity आसुची. कहीं कि ना सेठी जो aquatic ecosystem अछन, सेठी जो plants मन अछन, these are algae, phytoplankton, zooplankton, sea level अछन, सेठी बड़ा बड़ा tree नाथि. गोटे बर गछ जति प्रोडक्शन करि परिबो ता एंटायर लाइफ रे, गोटे आंब गछ जति प्रोडक्शन करबो एंटायर लाइफ रे, गोटे आल्गी जति करि परिबो ने. ये थालोफाइटा सी एंजियोस्पर्म, तो डिफरेंस आसीबो. जे लोअर क्लास को बिलोंग करसी, हाई क्लास को बिलोंग करसी, तो एई बडा जिंस रे तम ओशन जो अछि सेटी 70% एरिया ऑक्युपाई करथिले भी फैक्चुअल क्वेश्चन सी प्रोडक्टिविटी तार बहुत लो रहउची, दैट इज 55 बिलियन टन्स ड्राई वेट. बट एनुअल नेट जो एनपीपी देखिबी, that is 170 billion tons overall in of the biosphere.
And here comes our second topic, that is called as the decomposition. Clear? First one decomposition. Composition माने एकाठी हबा मिसिबा compose हिची, decompose माने breakdown हिची. Fragmentation, catabolism, bleaching, mineralization, and finally humidification. Humidification and finally mineralization. ये टॉपिक टा आसीबो. तो डिकम्पोज आमे कोन करछे ना गोटे हार्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को आमे गोटे ताको इजी प्रोसेस से कन्वर्ट कर दोछे. और बेसिकली कामटी करथानी को माने तो सैप्रोफाइट्स माने करथानी. सैप्रोफाइट्स में कहा बुझुचे ना जो फंगस हे गला किंगडम फंगी, the phycomycetes, the ascomycetes, the basidiomycetes, the deuteromycetes, the parasitic fungi, the saprophytic fungi, the symbiotic fungi. ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ କୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିକି ଗୋଟେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ ଫର୍ମ ରେ ବାୟୋ ଆଭେଲେବଲ ଫର୍ମ ତାକୁ ଡିକମ୍ପୋଜ କରିକି ଛାଡୁଛନ୍ତି. କ୍ଲିୟର? So any doubt till now, dear students, from your productivity segment? Dear students, any doubt? Shall I continue from this? Okay then. Asile abe katha karo decomposition. See, decomposition. It is a breakdown of a complex organic matter by decomposers into inorganic substances like carbon dioxide, water, and nutrients. It is largely an oxygen requiring process, and the raw material for decomposition is called as detritus. For example, dead plant remains like the leaves, the bark, the flowers, etc. The dead remains of animals, fecal matter, etc. is सब जाउची कहा भितरे ना तार detritus भितरे जाउची. One by one, first thing first बुझिया कहा करता है ना, it is a breakdown. What is decomposition? Means breakdown हिची. कहाँ breakdown हिची? ना complex organic matter. कहा द्वारा हिची? By the decomposers. और को thread breakdown हिची into inorganic substances. For example, carbon dioxide, water, and nutrients. ये जो गोटे स्टेटमेंट रे पांचटा क्वेश्चन नंबर पळे आसी कि कौन हेची, व्हाट इज द प्रोसेस एग्जैक्टली, दैट इज द ब्रेकिंग डाउन ऑफ whom, कहार ब्रेकिंग डाउन हेची, द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर. ओके, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक. तो किए करछि जिंसटी, हु डन दिस, द डिकम्पोजर्स. ओके, डिकम्पोजर से ब्रेक डाउन करी कौन कन्वर्ट करछंदी ना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल की केस माने लाइक द CO2, द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स. So it is largely an oxygen requiring process. A process को करया पाएंगे हम largely कौन दरकार होची, oxygen is required. Without oxygen we cannot do this thing. Excuse me. So without oxygen we're not going to do this thing. So it is a largely oxygen requiring process. And slush as the raw material for decomposition is called as detritus. Remember what is detritus? आगो पढ़ी भी DFC. DFC माने कौन है गला? DFC is called as detritus food chain. और detritus माने कौन है गला? The raw material for decomposition, the dead remaining, the dead plants, the dead animals, the dead remains of the animal, the fecal matter, the leaves, the bark, the flowers, ये सब को हमें कौन कहते हैं? detritus बोली कहते हैं. कि नहीं? तो गोटे मूसाटी मरी पड़ी बा जो गाଈର fecal matter गोबर हे गला, नडा कुटा पार्ट हे गला, बा जो गछर पत्र, गछर डाळ, गछर फूल जो सब झड़ी की पड़ी, all these things are called as what, the dead remainings. और से dead remaining को हमें कहते हैं detritus, जहार कौन होगा आगो decomposition होगा. तो we can see step by step of decomposition. Then the common step now one is fragmentation, second is leaching, third is catabolizing, four is humidification, and the last part is mineralization. ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଏଇ ପାର୍ଟ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ଟେପ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ. ଦ ଡିକମ୍ପୋଜିସନ ରେ କଣ କଣ ସ୍ଟେପ ଅଛି? Let me tell you one more time that first is fragmentation. Fragmentation होची कौन ना, fragmentation is simple or normal प्रोसेस जो हमें कौन करते ना गोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट को हमें छोटे छोटे सिंपलीफाइड फ्रैगमेंटेड डिवाइड कर दोचे. क्लियर? हमें ताको गोटे कॉम्प्लेक्स पार्ट को भांगी देले फ्रैगमेंटल छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर दे. जेम तमे बायोटेक रे पढ़ितला में डीएनए को कट करथिले, डीएनए को गोटे 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए को हम केबे ताको एकाकालीन देखि परिबा नाही, हमें ताको रैंडमली कट करथिले बाय यूजिंग व्हाट, यूजिंग एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स. वंस तक हमें कट कर देले, कट कर सला पर तक हम करथिले कोन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस.
ଆଉ ସେ J electrophoresis ରେ ତାର size accordingly, ତାର density accordingly, ତାର electric charge accordingly ସେମାନେ ସବୁ separate ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଗର ଜେଲ ରେ। तो ठीक से टाइप ର ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ କଣ କର ସିମ୍ପଲ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ କରୁଛେ। You can see the picture over here କି ଗୋଟେ ଗାଈଟି ମରିକି ପଡିଲା, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀଟି ମରିକି ପଡିଲା। ଦେନ୍ ତ ଇନିସିଆଲ ସେ ମରିକି ପଡିଲା ପରେ ତା ଟାଇମ ବାଇ ଟାଇମ ତମ ତା ଫଟୋ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜ ରୁ ସେ କେମିତି ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶି ଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ସେଠୁ ପୁଣି କିଏ ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ଫଙ୍ଗସ ଟି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ପତ୍ରଟି ସେଠି ପଡିକି ଅଛି, ନଷ୍ଟ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର ଆମେ କହନି ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ତିଆରି ଯୋଉ ବଡି, ସେ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମକୁ ମିଶିଯିବାର ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଡିକମ୍ପୋଜ ହଉଛି ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗ୍ରୋ କରୁଛେ, ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ଆମ ସାଇଜ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବଡ ହେଇଯାଉଛେ ୱି ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ, ୟେସ୍ ଆମେ ମାସ୍ ପୁଟ ଅନ୍ କରୁଛେ, ଆମର ବଡିର ଅବିକା ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ଆମ ସେଲ ର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ଟିସ୍ୟୁ ର ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି, ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ବଟ୍ ଆଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ ସେ ପୁଣି ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ କମ୍ପୋଜ କରିଥିଲେ ବଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡିକମ୍ପୋଜ। ତ ସ୍ଟେପ୍ସ ରେ କିଏ କିଏ ଆସିଲା, ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଆସିବ ଲିଚିଂ, ଥାର୍ଡ ରେ ଆସିବ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍, four ratio humidification, and five ratio mineralization. So let's target one by one at a time. What is fragmentation? The breakdown of detritus into smaller particles by the detritivorous is called as the fragmentation. Simple breakdown ହେଇଛି, breakdown ମାନେ ଭାଙ୍ଗିବା। କଣ ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି ନା detritus. What is detritus? The dead remaining of plants or the dead remaining of the animals. ତାକୁ ଆମେ କୋଉଥିରେ ଭାଙ୍ଗିଛେ ନା into smaller particles. ତ ବଡ ବଡ ଲାର୍ଜ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ କୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିକି ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ ରେ ବନେଇବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ। ଆଉ ଏ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି ନା ଡେଟ୍ରିଭରସ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଛି। ଡେଟ୍ରିଭରସ୍ କୋଉମାନେ ହେଇଗଲେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଇଜ ଅର୍ଥୱର୍ମ। ତ ଅର୍ଥୱର୍ମ କୁହାଯାଏ କି ଇଟ ଇଜ ଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଫାର୍ମର, ଏ ଫାର୍ମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହ୍ୱାଇ ନା ଦିନ ରାତି ସେ କଣ କାମ କରୁଛି ନା ଏ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର କୁ ବ୍ରେକ୍ ଡାଉନ କରିକି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇଡ ଅର୍ଗାନିକ ମ୍ୟାଟର କନଭର୍ଟ କରିକି ସ୍ମଲ ପାର୍ଟିକଲ ରେ ଭାଙ୍ଗିକି ମାଟିରେ ମିଶୁଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ମାଟିର ଫର୍ଟିଲିଟି ବଢୁଛି, ସଏଲ ଫର୍ଟିଲିଟି ବଢୁଛି ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ କୁ ସେ ମିନେରାଲ କୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କୁ ଅପଟେକ୍ କରିବାଟା ଇଜିଲି ହେଇପାରୁଛି। ଦେନ୍ ଆଉ ଥର୍ଡ ଜିନିଷ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସିଡ୍ ଯୋଉ ଆମର ସଏଲ କୁ ପୋରସ୍ କରୁଛି। କାରଣ ଯୋଉ ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ ହେଇଗଲେ ଆମର ଅର୍ଥୱର୍ମ, ତା କାମ ହେଲା କଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ କରୁଛି ସେ। ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟିଟା ଏବେ ପୋରସ୍ ହଉଛି ଆଉ ସଏଲ ଯୋଉ ପୋରସ୍ ହବ ତ ରୁଟ୍ସ ଯୋଉ ଅଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ର ଇଟ କ୍ୟାନ୍ ବେଟର ୟୁଟିଲାଇଜ ଦ ଅକ୍ସିଜେନ, ରେସ୍ପିରେସନ ଭଲସେ କରିପାରିବ, ସେ ହେଲ୍ଦି ହେଇକି ରହିପାରିବ। ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କିଏ କରୁଛି ନା ଡେଟ୍ରିଭର୍ସ କରୁଛି। ଦେନ୍ in the second part, what we are going to study is called as the leaching. The second step of decomposition is called as leaching. The water soluble inorganic nutrients, it will go down into the soil horizon and precipitate as unavailable salt. This unavailable salt is a precipitate ହେଇଯିବ, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଆଉ that is called as the leaching process. Clear? ଯୋଉ ସବୁ ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବଲ ଥିଲେ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେବା ଅବିକା ମାଟି ତଳେ ପଳେଇବେ। ଯଦି ତମେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଡାଇଗ୍ରାମ ରେ ये जो एनिमल टी पड़ी मरिकी पड़ी द पिग कहीपर सुअर कहीपर देखो धीरे धीरे कौन बॉडी डिक्रीज करुच्ची। तापर गोटे फटोटे इमेज भाया रोचे डेड रिमेनिंग पूरा मैटर मिस हाड़ कंकाल सह सब मैटर तार मिस जाए अल्टीमेटली। तो ये जो प्रोसेस रे जो वाटर सल्युबल पार्टा जो थिला सी जो माटी तळु पळैबा अबिका द वाटर सल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इट विल डायरेक्टली गो डाउन into the soil horizon and precipitate as unavailable salt, that is called as leaching. ବୁଝୁଛି ସେ ମାଟି ତଳକୁ ଯାଇକି ରହିବ, that is called as leaching. ଥର୍ଡ ଆସିଲା କାହା କଥା, କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍। ଆଉ କ୍ୟାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଆମେ କାହା ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସ କରିବା, the degradation of detritus into simpler inorganic substances by bacterial and fungal enzymes. क्लियर? एटी हम कहूँ डिग्रेडेशन होची, डिग्रेडेशन माने कोन भांगीबा, डिग्रेड होबा। के डिग्रेड होची ना डेट्रिटस कोन को डिग्रेड करू, डेट्रिटस को के डिग्रेड करूची ना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बैक्टीरियल फंगल एंजाइम द्वारा होची। तो पिला माने एटा क्वेश्चन आसेला, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फ्रैगमेंटेशन एंड कैटाबोलिज्म? So my question is to all of you, what do you understand, what is the difference between fragmentation and catabolism? Let's quickly interact. The students, let's quickly interact. What do you mean by this thing and what is the difference between two things? My question is to all of you, what is the difference between fragmentation and catabolism?
what do you understand by these two concepts? Fragmentation में breakdown होतिला, catabolic में breakdown होची, सी भी गोटे complex को simpler करची, ये भी गोटे complex को simpler करची, but what is the difference? वो तो similarity कथा कहली, difference कौन? जे क्वेश्चन आंसर दे परिबो, आई थिंक दैट्स ए पार्ट टे बुझिची, तो पिलामन ट्राई करो, भूल हो कि ठीक हो, एटलीस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट योर आंसर. आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेस. No responses till now. The participants. So ମୁଁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତମାନେ ଶୁଣୁଛ ନା ଶୁଣୁନ ବୋଲି? You cannot participate. No, simple question thila, what is the difference between fragmentation and leaching? The fragmentation and catabolism. ठीक ଅଛି, let me answer this question to all of you. In the fragmentation process, सेठी हमें कौन कहते simple breakdown करचे. Simple breakdown ହେଇଛି. It's a physical process. Suppose गोटे कागज अच्छे मुझे चिर देली, गोटे large piece of paper मुझे दीटा पार्ट डिवाइड कर देली. So it's a simple random physical process. No involvement of any kind of enzyme, no involvement of any kind of catalyst. It's no chemical reaction. But in case of catabolism, एटी कौन ହେଇଛି ना एटी ସେମାନେ कौन कहते ना breaking down ହେଇଛି. तुमे anabolic process, catabolic process जानिचो. Catabolic process माने breakdown हबो. ଆଉ ସେ ବ୍ରେକଡାଉନ ରେ କୋଉମାନେ ଭାଗ ନେବେ ନା କିଛି କ୍ୟାଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ जो माने कि एंजाइम्स जाको हमें कोचे बायो कैटलिस्ट जाको हमें कोचे सेठी बैक्टीरियल एंजाइम हो फंगल एंजाइम हो and it's a kind of chemical reaction. So the basic difference between fragmentation and catabolism is this: fragmentation is a very simple physical process while the catabolism is the complex process जोट हम कौन करते ना केमिकल एंजाइम को यूज करके बैक्टीरियल एंजाइम फंगल एंजाइम को यूज करके ताको ब्रेक डाउन करते. तो देखो फ्रैगमेंटेशन में से जिंस होतला ब्रेक डाउन ऑफ डिटेटर्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स. किंतु एठी रियल कैटाबोलिज्म कोन होची डिग्रेडेशन ऑफ डिटेटर्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. सेठी करूथिले को माने डेट्रिटिव होरस माने करूथिले अर्थवर्म करूथिले. एठी को माने करछेंदी ना बैक्टीरियल फंगल एंजाइम माने करछेंदी. दैट इज द थिंग. Clear? The fragmentation, leaching, and catabolism is thing, everything. It occurs simultaneously. empty nahi the fragmentation about, then leaching about, then catabolism. No, all these segments are happening simultaneously. गोटे 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 एमती न हेगी एकाटे सब जगह काम होची. फ्रैगमेंटेशन भी चलीची, एपटे लीचिंग भी होची, जो वाटर सॉल्युबल पार्ट अछि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉइल होराइजन को जीव. एंड थर्ड जो कैटाबोलिज्म प्रोसेस अछि एटी कोन होची डिट्रिटस माने ब्रेक डाउन करछंती कहा द्वारा ना बैक्टीरियल फंगल एंजाइम द्वारा. Then asla कहा कहता है important topic humidification. Point number 4, decomposition of pasta step to step number 4 कौन होची ना accumulation of humus. जो डार्क amorphous substance अछि जाको में humus बोली कहउचे. तुम जानथि हो गोटे माटी रो fertility को किए देखउची. Who described the fertility of the soil? It is the humus. जेते amount रो humus से soil रे अछि सेते fertile से soil हे परिबो. काहे कि कोन पई कि ना ह्यूमस गोटे एमिडिया जिंस जे कि बहुत लॉन्ग टाइम नउची डिकंपोज होआ पई कि मिनरलाइज होआ पई कि. तो accumulation of humus, accumulation माने एकाठी हबा जमा हबा. What is humus? The dark amorphous substance in soil. The humus is resistant to microbial action and so decomposes very slowly. ताको माइक्रोबियल एक्शन ने जो बैक्टीरिया हेगला फंगल हेगला एमान ताको भंगीबाटा मिसीबाटा टे हेतो. देखो जे स्लोली एब्जॉर्ब होची से लॉन्ग टर्म पे जीव. फॉर एग्जांपल you take a bite of dairy milk silk or you take a bite of some chocolates. ये जो हमारा कैंडीज हेगला डेयरी मिल्क चॉकलेट हला में किटकैट ला तम तो गोटे बाइट नेला चोबे देला खाइ देला ढुकी देला चली गला. बट ए जो कैंडी अछि जो हम कैंडी जो चॉकलेट्स खाउ से पल्स से जाओ कि से भी किछि भी गोटे कैंडी तम एग्जांपल एक्लेयर्स हे गला तो तुम पार्टी रख लियो. यू आर नॉट च्यूइंग दैट चॉकलेट बट सिंपली पुट दैट कैंडी इन योर माउथ एंड यू जस्ट स्टॉप. दैट जिंस कौन से धीरे 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 रिलीज होबा स्टार्ट करछि.
तो जोटा जल्दी जल्दी क्विकली करूची से संग संग सरी जाउची, जेटे स्लोली एब्जॉर्ब होची इट विल लास्ट लॉन्ग, ये बहुत टाइम में रही पारिबो। तो ह्यूमस रो पावर होची से, ह्यूमस रो पोटेंशियल होची से कि इट इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, सो इट डिकम्पोजेस वेरी स्लोली। और जेहेतु कलरडाइल इन नेचर अच्छी, बीइंग कलरडाइल इन नेचर, इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो आप पाखे जो न्यूट्रिएंट्स माने अछंती ये लॉन्ग टर्म जाई की रिजर्व हे की रही पारे माटी। तो ये जो ह्यूमस अच्छी पार्टी इट विल टेक, देखो ये डिकम्पोज तो हबो, जो ह्यूमस जो पार्टी अछि मैटर तो मिसिबो अल्टीमेटली, किंतु स्लोली मिसिबो। जो चॉकलेट मु चोबई जे चॉकलेट जहाले मु तो खाइबी ना, बट से स्लोली जाउछ बॉडी तो से लॉन्ग टर्म जाई कि से मजाटा मु पाई परचे, से जो डोपामिन सीक्रेट मो बॉडी रे हे परचे चॉकलेट को पार्टी रे भर्ती करके ना। तो बीइंग कलरडाइल इन नेचर इट सर्व्स एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो ये न्यूट्रिएंट्स माने को रिजर्व करी रखुस्ता बॉडी। And the last step here is called as mineralization. And what does exactly mean? That is the release of inorganic nutrients due to the degradation of humus by some microbes. जो माइक्रोब्स मान कथा कहते कि ह्यूमस से डिकम्पोज करि पारंती नहीं, नॉट एग्जैक्टली करि पारंती नहीं, स्लोली करंती। तो जो रेट टी अच्छी कि इतनी अमाउंट रे पारि थांदा से रेट टा कम थाए, बट अल्टीमेटली सी भी मिनरलाइज हबो, और से ह्यूमस जो रिजर्व हे कि थिला न्यूट्रिएंट्स माने सी भी माटी जाई मिसिबे। तो if you quickly summarize the entire segment, decomposition माने कौन थिला, सिंपल डिकम्पोज होची। डिकम्पोज कहार होची ना डेट्रिटस मानकर होची, हमर जो डेड रिमेनिंग हे गला, द फिकल रिमेनिंग, द डेड रिमेनिंग ऑफ द प्लांट्स ऑफ द एनिमल्स तक हम भांगुजे डिग्रेड करचे। आसो डिग्रेडेशन पाई के हम कहार हेल्प नोचे, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिजिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो पांचटा स्टेप हम साइमल्टेनियसली करचे। So if you take a diagrammatic representation of the entire decomposition cycle in a terrestrial ecosystem, you can see here is a large tree, a big tree. The tree grows in the soil. So गछटी कोडी ग्रो करछि, माटी रे ऑफ कोर्स, आ समुद्र थोड़ी हबो गछटी, क्लियर। आ छात ऊपर थोड़ी हबो, समुद्र में थोड़ी हबो, एटा कोठी हिची, इन द सॉइल। सॉइल ग्रो कला परे से गछर पत्रडी पडिबो, तो पत्रडी कोड पडिबो ऑफ कोर्स इन द ग्राउंड। से जो ग्रीन लीफ टी फॉल्स करछि, मतलब देखो ग्रीन लीफ भी फॉल कर परिबो, येलो लीफ भी फॉल कर परिबो, ब्राउन लीफ भी फॉल कर परिबो। ये ग्रीन येलो ब्राउन काहे की होछि? आंसर दिस क्वेश्चन। Why there are different colors of leaves present in the plant? So usually it was light green, then it will convert into bright green by grass green, then se convert होची light yellow, then se होची deep yellow, तापर होची brown। कौन पाई केमती होची? What is the difference between all these processes? Who produce this colors? The colors asila kotu. Who is responsible for green color? Who is responsible for yellow color? Yes, the students, you can answer this question. Any of you? Keep participating or no? This is not the way a class should run. Anyways, the answering to your question answer हो जाएगा कि green है different different colors associate colors by responsible थे जो pigments बने actually. If chlorophyll is there, it is bright green, grass green. जरी xanthophyll सेठी अच्छी, xanthophyll element से yellow color है जीवा. Then जो सेठी fucoxanthin अच्छी, सागो जाके brown color है जीवा. That is the same. Carotenoids अच्छी से orange color हवा carotene अच्छी जदी. तो ये जो different different colors हम देखी पार जो से color जो pigments सब अच्छी से pigments पाएंगे जो responsible होचे। Okay, coming to my this segment, that is decomposition. So there is a big huge tree present in the soil, grows in the soil. So one fine day से plant ର କିଛି leaf और matter ऐसे पड़िला, matter पड़ सारला ପରେ some are eaten by insects and other animals and the nutrients and energy enter the food. तो से जो पत्रों किछि इंसेक्ट्स माने खाइले, पोको चोको माने खाइले, से पोको जे खाइ से पोको पुनी गोटे की खाइतो, गोटे चढ़ेटे खाइतो, चढ़े को पुनी अलनी के आसी खाइतो, गोटे ईगलटे आसी खाइतो। तो एई बेसिस रे कोन होछ ना जो एनर्जी टी से प्लांट रू तार अबिका प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर हे की तो फाइनली ऊपर को जाउची। तो एनर्जी टा एंट्री कर गेला कोठी की ना न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर द फूड वेब, फूड वेब बा फूड साइकिल को फूड चेन को से माने एंट्री कर गेले। बट जो रिमेनिंग पार्ट रहला द सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन, देखि लीचिंग हे जीवा, लीचिंग बुझैतली
टीचिंग ने कौन कहथिला हमें जो वाटर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस अछि से माने डायरेक्टली सॉइल रो हॉरिजन को पळेबे सॉइल हॉरिजन तळे जांकी से माने रहि जिवे आ से माने जांकी ऑर्गेनिक रिच सॉइल फॉर्मेशन करबा स्टार्ट करिवे देन आउ जो किछि पार्ट अछि इट लीव्स partially consumed by decomposers such as fungi and bacteria they begin to lose form and become litter ସେମାନେ ତାକୁ ଅବିକା ଲିଟର ମାନେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା କନଭର୍ଟ କରିଦେବେ ଡ୍ୟାମ୍ପ ଏରିଆ ତମେ ଜାଣିଛ ଫଙ୍ଗସ କୋଉଠି ଗ୍ରୋ करे moist area humid area damp area ये जगह मैंने ग्रो करना स्टार्ट करें फर्दर द डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म बैक्टीरिया सॉइल माइट्स फंगी एटसेट्रा ସେମାନେ ତ କଣ करे फाइनली माटी को रीच करिवे देन तो जो न्यूट्रिएंट्स टी नै की जहा को से एक्युमुलेट करे की से प्लांट तर कैनोपी को इंक्रीज करथिला एनहांस करथिला प्लांट बॉडी जो ग्रोथ आसला प्राइमरी ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ और प्लांट जो आगो जाएंगे ग्रो करछि तो सेही न्यूट्रिएंट जो ठु नै छला अल्टीमेटली सेटा से पड़ला दिन पिला माने वाटर साइकिल तुम देखि तो वाटर साइकिल होजी कोन ना सन रहिले सेंटर रे सन रहिला सोलर लाइट पहला कोठी ऊपर ना वाटर रिजर्वर ऊपर पड़िला सी गोटे ओशन टे हिताउ गोटे रिवर टे हिताउ गोटे लेक हो गोटे पॉन्ड हो गोटे स्टैग्नेंट वाटर जो जमी की रहे जगह पड़िला वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर एंड वाटर वेपर जो हल्का अछि सी अबे पड़ेला ऊपर क्लियर सेटे जाई से कूल डाउन हेची कूल डाउन हे सेटी कोन करछि ना अबिका वर्षा होछि अब वर्षा इसे पुर रिटर्न करके फोन से ग्राउंड को आसिला तो वाटर साइकिल जेम चली छि एटी से बड़ा साइक्लिंग प्रोसेस से चली छि डिकम्पोजिशन जो होछि डिकम्पोजिशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेप अछि नंबर 1 इज फ्रैगमेंटेशन इज अ फिजिकल प्रोसेस जो माने करछन ना डेट्रिटस माने करछन डेट्रिवर्स माने करछन अर्थम इज द एग्जांपल नंबर 2 is the leaching segment where the water soluble inorganic substances directly is absorbed into the soil horizon. Number 3 is the catabolism process where the entire segment is broken down into simplified parts. Complex part is converted into simplified part by the help of the bacteria, by the help of the fungal, by help of the enzymes. Sigala first asila tamari humidification and the last one is mineralization. The pasta step रे काम होछि. So, what are the factors which influence the decomposition? That is the chemical composition of detritus. The decomposition is a very slow in detritus rich in lignin and chitin. देखो एमाने कोडा स्लो होबे लिग्निन ने तयारी छि काइटिन ने तयारी छि इफ यू रिमेंबर इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर तुमरा डेफिनेटली पढिछो व्हाट इज लिग्निन व्हाट इज काइटिन काइटिन वाला टॉपिक तुमको ऑलरेडी पढ़ाई छि इन द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर 11th क्लास रो बट तुमे काइटिन को आउथरे पढितो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर द फंगस पाखरे हम जो किंगडम फंगी अछि द मल्टी सेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स किंगडम फंगी से किंगडम फंगी रो सेल वॉल जो अछि द सेल वॉल रो मेजर कंपोनेंट होछि कि काइटिन और तार से देखिए अछि पॉलीसैकेराइड्स तो काइटिन जो अछि इट टेक्स वेरी स्लो टाइम इट टेक्स वेरी लेस टाइम टू decompose actually तार मतलब decomposition is very slow in case of detritus rich in lignin and chitin but कहा पई क्विकर हे परिबो कोडा जल्दी मैटर मिस परिबो ना if the detritus is rich in nitrogen and the water soluble substances like sugar ଗୋଟେ एग्जांपल टे दोछि पिला माने सिंपल एग्जांपल टी तुम स्कूल रे बा तमरो हायर सेकेंडरी स्कूल कॉलेज जब तुम एनुअल स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करथिबो एनुअल स्पोर्ट्स जब तुम 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करछो एंड सेठी तुम जो कंप्यूटर माने ट्रैक रे ठियाइछो the PT sir comes and he said on your mark on your track get set and go and finally you are running to your destination जब तुम डेस्टिनेशन में पहुंचो जे फर्स्ट हैला जे सेकंड हैला कि थर्ड हैला तुम टाइमिंग पे डिपेंड करछि once you reach there तो सेठी जो वॉलंटियर्स माने अछंती से हाथ रे ग्लूकोन डी डबा धरे ठिया आइथिबे देन तो जो माने दौड़ी के आस्थिले जो माने को अबिका बॉडी रे अबिका बहुत एनर्जी यूटिलाइज हे से माने ग्लूकोन डी दिया होछि my question is that ग्लूकोन डी हमें काहे दोचे I cannot do simply give them a rasgulla or a gulab jamun ke bata to first has two here is a rasgulla the second has two here is a gulab jamun or the third it's a gulugula तो काहे के हम सेमती करने five are using this glucon D वो जो ग्लूकोज जो अछि that is the instant energy से बॉडी को जीव माने संगे संग से अबिका सॉल्युबल हे कि डाइजेस्ट हे कि एब्जॉर्ब हे परिबो हे जो मुगली रसगुल्ला कथा कहली एठी बा गुलाब जामुन कथा कहली कि इट विल टेक टाइम टू डिकम्पोज ना तो गोटे स्लोली एब्जॉर्ब होची गोटे क्विकली एब्जॉर्ब होची दैट्स अ डिफरेंस ते जो मोर फंगस हे गला जोटे लिग्निन अछि जोटे काइटिन अछि तांकर डिकम्पोजिशन स्लो होबे डेट्रिटस मानंदरे बट क्विकर को माने हे परिबे
if the detritus is rich in nitrogen, if the detritus is rich in water soluble substances like the sugars, say case रे ହେଇପାରିବ। Second, ଗୋଟେ ହେଲା chemical composition factors influencing କରୁଛି, ଆଉ ହେଲା climatic factor। Climatic factor ଆମେ କାହା କଥା କହୁଛେ ନା the temperature and the soil moisture। soil ର କେତେ moisture ଅଛି ଆଉ ସେଟା temperature କେମିତି, you know fungus ଯୋଉ ଅଛି ତା grow କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଗୋଟେ moist environment। ठीक अच्छे से कोई जगह हेबे ना जो जगह अबिका टेम्परेचर अच्छे वार्म एरिया सब नहीं पाए वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट हम फेवर करती हेतु जो क्षीर रो दही हमें कला बेले मामा को देखिते क्षीर को उषुम करती नखसुम क्षीर हेले ही सेठी तबे ऐड करिवो से जो लैक्टोबैसिलस लैक्टोस को ऐड करिवो एज अ कल्चर से कल्चर ऐड कर सला पर सेठी ग्रो करिया ପାଇଁ କି इजी हेजिवो देन तांग भाई वाल से फ्रिज रे हमें को भी जिंस रखिले से खराब होने जल्दी रीजन होची कोन रीजन होची फिल्म रो जो एनवायरनमेंट अछि फ्रिज भितरे that is not suitable for any microbial activity। ठीक है तो फ्रिज रा टेम्परेचर का एक्सट्रीमली लो रे रखिले एक्सट्रीम लो माने कोन हेटी 4 डिग्री सेल्सियस रु भी कम रहला 0 डिग्री सेल्सियस बा किछि डीप फ्रीजर -18 डिग्री सेल्सियस तक हम टेम्परेचर सेट करि परछे आ एते कम टेम्परेचर रे जे जो एंजाइम माने अछंती से माने ता ऑप्टिमम टेम्परेचर न पाइले ऑप्टिमम मनोवर न पाइले दे विल गेट डीनेचरिंग और जब से डीनेचर हे जे से प्रोसेस करि परिबे नहीं और जब प्रोसेस करि परिबे नहीं तो हमर माइक्रोबियल एक्टिविटी फूड टी सेफ हे कि रहि पाइला जब जदि आमे ताको रूम टेम्परेचर रखुचे से अबिका वार्म टिके अछि बाहरी ह्यूमिडिटी अछि तो सेठी से माइक्रोबियल एक्टिविटी हबार चांसेस अधिक बढ़ि जिवो तो से कथा कहला कि लो टेम्परेचर एंड anaerobiosis like the inhibit decomposition resulting in buildup of organic materials clear the data question it is like that what are the factors which influencing your decomposition your answer is two things one is the chemical composition mediators and number two is the climatic factors co climatic factors it is like temperature kete achi soil moisture kete achi what is the pH exactly there so if everything falls into its place then it will go if everything is not falling into its place it will simply resolve se kamate he pariba so now it's the more awaited situation it's the most awaited part that is called as the question answer segment तो माने केते पढिलो केते बुझिलो से पार्ट का मैं अबिका क्वेश्चन आंसर राउंड समाप्त करिबा so this I can see the participants are declining I don't know what is the reason behind this but maybe due to your rain at your places or maybe due to electric issue network issue jaha bhi kichhi heitibo but those participants are present over here my simple question to all of them can kindly participate in this question answer segment and let me know ki tame kete bujhila kete jani palla nai boli the first thing first question thila kaha katha abe the term that describe the total biomass of organic matter produced by plants per unit area over a period of time is called as dash total biomass or organic matter produced by plants per unit area गोटे unit area रे जो biomass जो बनिछि the organic matter जो बनिछि that is called as dash तब हमें कौन बोली कहउछे any one of you shall we continue this question segment or shall we go directly to the next lesson the participants are you going to answer these questions are you willing to answer these questions see every month we're having a NEET test monthly NEET preparation test हमर जो होची से क्वेश्चन आंसर पढुची तो ता ପାଇଁ एक प्रिपरेशन पार्ट आसिला तुम केते पढिलो केते बुझिलो केते जानि पले से पार्ट हम डिस्कस करछे क्वेश्चन नंबर 2 which of the following ecosystem has the highest net primary productivity per unit area सब अधिक के बनेइबो एटा क्लास टाइम रे पढेला रे कहितली क्वेश्चन सब लो बनै थाए तो हाईएस्ट के बनै थाए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सवान्ना deciduous forest alpine meadow किए बनाए थे वैसे the rate of production formation of new organic matter by consumer is known as dash the very fundamental question very easy questions and these are type of questions which are being asked in your NEET entrance examination and also these are important for your upcoming HSC examination your annual higher secondary education जो तुम एग्जाम देवा जाउछ मैथ्स
25-26 around the exam over 2026 re. From this chapter you can expect 1 mark questions, 2 mark questions, and 2.5 mark questions. In 2024, there was a question asked from this segment, that is the pond ecosystem or grassland ecosystem. It's a long question, but in this segment, you will be asked like this kind of questions can be asked. So kindly participate. Put your view upon this. तमने कौन बुझी पाइलो भूल हो तमे आंसर देले I can correct you, I can rectify you over here. No one? What is the annual net primary productivity of the whole biosphere? Entire biosphere annual primary productivity केते अछि? It is 170 billion tons मन पड़छि इन तमे कथा हैतिले. Net primary productivity केते हबो? ओशन ना केते होछि? Plus 55 billion tons किसी मन पड़छि. Come on. Is everything all right? Everything all right? You can you access the chat box? There are 10 participants present over here. None of them is saying anything. Anyway, so this is the thing. We have to wind up this part. So if you are not willing to answer this question, so let this question be saved in your phone, in your screens. You can take a screenshot over here. That screenshot नहीं जाता गोटे पिला माने ताकि तुम आगु जो exam आसो you will be beneficiary from this part. So without wasting further time, there are 10 questions for all of you. I have prepared 10 questions. So 10 question answer कौन होगा? Kindly note it down in the part. Done. So here, thank you for your kind attention. We'll meet after a short break. So I don't think our break नवाटा ठीक रहइबो. हमें continue कर देबा. कारण break परे तमना participants आहुरी कमी जिवो. तो second topic हमें start कर दो energy flow. But it is very unfortunate to hear from you that none of you is interacting today. This is my first class where I can see none of the participants is interacting, not in the chat box, not in the audio part. And this is something which I cannot digest right now because it genuinely take a lot of things to get back to you. तमना पाके सोचे पहुंचे पाए कि बहुत सारा प्रोसेस करिया पड़ुचे हम मानको पिला माने DHSC, the subject experts, the resource persons, the meeting, everything is doing तमना benefit पाए हम काम करूछु कि तमने से concept of grasp कर परिबो. But तम जदि तम end रे part को तमे grasp करिया को चाहू ना, then it is very unfortunate to all of us. The topic which I'm going to teach you right now is called energy flow. And here I can see कि completely monologue ही होची. मुही question करूची, मुही answer दोची, मुही पचारुची बारंबार जिनस. And I'm not getting a single response from any one of you. That is very unfortunate.
But ठीक है, being a teacher, my work is to have this patience. So, so let's quickly start the next segment, that is energy flow. So Jain is why Anna participants kindly don't annotate in the chat box. Kindly don't. If you have anything to say, just simply access the chat box and tell me there. Or you can simply unmute yourself and tell me what is happening over here, happening over there. Don't annotate, huh? Please. Next. So in this part, the participants kindly stop annotating in this part. Now, see, asla hota energy flow. Sun is the only source of energy for all the ecosystems. We are living in the Milky Way galaxy, and in the Milky Way galaxy, sun, the solar system, sun, the star sun is our only source of energy for all the ecosystem, except some deep sea hydrothermal ecosystem. That sunlight reach kari parni. जोटी कौन अच्छी ना जोटी डीप सी रे सनलाइट पहुंचुनी सेठी कोज पार्ट चलचे सेठी केमोसिंथेटिक चलीची सेठी ब्रेकडाउन होची केमिकल पार्ट और नो फोटोसिंथेसिस देयर तो से जगह छाड़ देले और सब जगह रे सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स of the incident solar radiation, less than 50% is photosynthetically active radiation, that is called as PAR. Sun में जो light टी आसुचा मना पाखु is 100% light देखिए 20 से 100% रू केवल and केवल only less than 50% light is called as PAR, that is photosynthetically active radiation. But ये जो plant अच्छी से जो capture कर पारिबो only 2 to 10%. इमेजिन कर परछ जेम हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे पढिथिले लिंक करि पारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे 50% जीन आर स्टिल नॉट डिस्कवर्ड द फंक्शन हम जाना नै the functions of 50% gene is still unknown, and out of this 50% known gene only 2% are actually coding for the protein. Yes or no? जिनसटी कौन कोची कि ना जो हमारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़िथिला मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर रे से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पार्ट जो थिला ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो 50% जीन हम डिस्कवर करथिले जो लार्जेस्ट क्रोमोसोम थिला क्रोमोसोम नंबर 1, द स्मॉलेस्ट वन इज क्रोमोसोम नंबर y, the 2968 number of gene, 231 number of gene से जो पार्ट थिला सेटा में स्टेटमेंट थिला the salient features of human genome रे थिला कोन कहले पिला माने कि 50% जीन रा फंक्शन स्टिल अननोन एंड जो 50% नोन अच्छी सेतिरो भी केवल 2% लेस देन 2% इज एक्चुअली कोडिंग फॉर द प्रोटीन. तो सेही कांसेप्ट तुम लिंक कर परिबो एठी कि जो हमर सनलाइट जो हम पाखो आसी पहुंचुची सेतिरो 100% रो 50% इज पीएआर, less than 50% is called as photosynthetical active radiation, and out of this 50% only the plant is capturing only 2 to 10% of the PR, only this. The plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria like the autotrophs, they fix the solar radiant energy to make them food. As a food one जो energy utilize करछने plant जो capture करछि only 2 to 10% of the PAR, and this energy sustains the entire living world. एनर्जी कौन करछि एंटायर लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करछि. व्हाट डू मीन सस्टेन करिवा? सस्टेन माने तक कंटिन्यू करी चलीछि गोटे कंट्रोल मेकानिज्म टे बनै रखछि. These ecosystems obey the second law of thermodynamics in chemistry as part. Then, Konguchi, they need a constant supply of energy to synthesize the molecules, and it helps to counteract the entropy. मन पकाओ जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर थिला एंट्रोपी थिला एंथैल्पी थिला डेल्टा जी कौन चेंजेस आसुची से डेल्टा एच केता आसी हीट रे कौन चेंज होला एंट्रोपी केते दियाला एंथैल्पी केते दियाला तो सही पार्ट ऑफ इकोसिस्टम को कोजना इट ओबेज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स they need a constant supply of energy to synthesize the molecules, and it helps to counteract or the entropy part जब हम करते हैं. Now the producer, if you see the autotrophs, they are organisms that synthesize food. The food बनौछि किए producer. Those who can produce is called as producer. Yes or no? Producer काहे कहबा? Now those who can produce the food for ourselves, that is called as a producer. They are known as the producer.
They are the organism which can synthesize the food. And in a terrestrial ecosystem, the major producers are herbaceous and woody plants. ସେମାନେ majorly କୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି the herbaceous ମାନେ ଅଛନ୍ତି the woody plants ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନେ part herbs ହେଇଗଲେ shrubs ହେଇଗଲେ tree ହେଇଗଲେ they can produce the food for us in a terrestrial ecosystem if you see. The primary producers in aquatic ecosystem are phytoplankton, the algae, and the higher plants. If you see the primary producer common mainly के बनाउछन् aquatic ecosystem phytoplanktons. मन पर्छ कहिले phytoplankton, zooplanktons, जो phytoplanktons माने अछन्ती जो algae माने अछन् thallophyta, the chlorophyceae, the phaeophyceae, the rhodophyceae, and the higher plants like the gymnosperms, the angiosperms. These are the main primary producers. The energy trapped by the producer is passed on to a consumer or the organism dies. जो energy से जो retain करिछि से जो energy को सीता body रे accumulate करिछि या तो से part को से कौन करिबो ना trap करि परिबो ताकू पासन करि परिबो नल से die हे गले ultimately से part टी matter मिसि जिवो जो environment से जिंस से receive करतिला से से पुन ताकू give back कर देके आसीबो. So this is the thing. The first thing first, what do you mean by producer? Producer तमे काहाको बुझौछ ना producers ହେଇଗଲା ସିଏ autotrophic organisms, those who have the ability, those who have the potential to produce a thing. तो जिनसे तैयारी କରିବା ପାଇଁ process that is called as producer. In the second part, we will see about the consumers, the heterotrophs. Now, these are the animals that directly or indirectly depend on plants for food. And they include what? They include the primary consumers like the herbivores who feed on the plants, for example, insects, birds, mammals, and the mollusks. So, one part who are the secondary consumer over here? The who feed on the herbivores. माने बुझे part the frog the fox the man etc. And who are tertiary consumers like the secondary carnivores humans. For the example, feed on primary carnivores, for example, tiger, lion, etc. Buja party. Producers are those who are ability to produce. Consumers are those who do not have the ability to produce and to get the energy for their sustainability, to get the energy for their aliveness. They are dependent upon the producers. The producers are autotrophs while the consumers are the heterotrophs. Here, the consumers there again there are three categories. One is the primary consumer, the secondary consumer, and the tertiary consumer. The superior consumer. The primary consumer those who are basically feed on the plants. जो माने plant eater अच्छे जो माने herb eater अच्छे herbaceous अच्छे like the insects, the birds, the mammals, the mollusks. Mammals से क्या है the mammals से गोटे हरिण टाइप्स पर deer ही पारिबो, a cow, a goat, a giraffe, or you can say a sheep. एମାନେ ସବୁ ଆସିପାରିବେ mammals ରେ जो माने कौन करछन ना डिपेंड करछन हर्ब ऊपर. जिराफ केवल घास खाइबो, से एनिमल खाइबो नहीं. गोटे गोट हे गला, गोटे sheep हे गला, तो गोटे deer हे गला. They all are dependent upon what? They all are dependent upon the herbs. So these are called as basically herbivores. Those are called as primary consumers. In the secondary consumer segment, they are called as the primary carnivores. They feed on the herbivores, for example, the frog, the fox, man are secondary consumer तो man ସବୁଠି ବି ରହିପାରିବ man herb ବି ଖାଇପାରିବ man ସେ ଯୋଉ primary carnivores ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ eat କରିପାରିବେ ସେ part ଯେମିତି ଭାବେ ଘାସକୁ ଖାଇବ ଝିଣ୍ଟିକା ଝିଣ୍ଟିକା ଖାଇବ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗକୁ ଖାଇବ ସାପ ସାପକୁ ଖାଇବ କି hawk ହେଇଗଲା ବା eagle ହେଇଗଲା and then finally decompose ହବ जो entire process ଟି ଚାଲିଛି that is called as a food chain ଆଉ ତାର ଯୋଉ interactive link ଅଛି that is called as the food web ଏ part ଆସିବ so you better know about the difference between the producer and consumer. Producers are those who can produce. Consumers are those who cannot produce. They are directly or indirectly depend upon the plants for food, and they include three categories. One is the primary consumer, secondary consumer, and the tertiary consumers. Now, here comes about the food chain. The chain of feeding relationship between the different organisms is called as the food chain. And this food chain is of basically two types. One is the GFC and second one is the DFC. GFC means what? The grazing food chain. And the DFC means what? The detritus food chain.
So what is the difference between these two segments? What is GFC and what is DFC? Now the grazing food chain we are talking about the grazers, the cows, the buffaloes, the cattle. ଯୋଉମାନେ grazing କରି ଚଳୁଛନ୍ତି ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ingest କରୁଛନ୍ତି. But in case of detritus food chain, they are the saprophytes. They are basically depending upon the date remaining of the animals, date remaining of the plants. when ତାଙ୍କ ଉପରେ depend କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେମାନେ energy gather କରିପାରୁଛନ୍ତି. That is called as the detritus food chain. Okay, so let's quickly understand one after another. Okay, so in the grazing food chain, you can see here the primary consumer feeds on the living plant, that is called the producer. For example, grass is being eaten by a goat and the goat is being eaten by a man. Yes or no? The grass is here is the producer. Grass is the produce kurchi. Grass is the plant. Grass is the autotroph. It can produce its own food by the process called photosynthesis. After the grass produce this segment, after the grass produce its biomass, then the grass is being eaten by a goat. The grass is being consumed by a goat, and goat is a herbivorous animal. Goat cannot eat other animals. It is herbivores. It directly depend upon the grass. So that's why it is called as a primary consumer. But the man, it can eat both the leaves, vegetables, and the man, it can also eat the secondary consumer like the primary consumer को से eat करिपारिबो. Then second असला क्या कहता है detritus food chain, the DFC. Here the primary consumer feeds on dead organic matter, that is the detritus, and the death of this organism is beginning of the DFC. तो जोटी organism नो death ହେଲା सेठू DFC रो start ହେଲା. organism रो death ही गला, then सेठू से जो dead body अच्छी, जो dead remaining part अच्छी, ताको खाया पाई को मन ऐसे गले detritus ऐसे गले. So you can see those two segments. The गोटे cabbage leaf अच्छी eaten by a caterpillar. The butterfly रो पूर्व part caterpillar में कोई परिबा, and then it is eaten by a truss. जाको हम एठी कोई पड़चे जो bird ହେଇଗଲା ସେ caterpillar ଖାଇଦେଲା. That is the secondary consumer. But in the detritus food chain, the dead leaves, the dead remaining, see like our first, it is eaten by the woodlouse and then eaten by the blackbird. So ये part continue ହେଇକି चलेगा process रे. So GFC and DFC is very very different. तो part टा बुझी पाइल and तमर annual higher secondary education जो exam हबो, HSC exam हबो, से exam में you will be asked this question, difference between GFC and DFC. Then clear? Is it clear till this? Now the third part is basically the detritus is made up of the decomposers, the saprotrophs, such as the fungi and the bacteria. The secret digestive enzymes that break down detritus into simple inorganic material which are absorbed by them, and thus they get energy and nutrients. So, energy and nutrient भी पाउछन्दी. The detritus are basically the decomposers. से decompose करिवे, भांगिवे process टाको. और decomposer कोमान अच्छन्दी ना ए आसिला eukaryotic fungi and prokaryotic bacteria. Clear? So fungus man अच्छन्दी. Fungus are multicellular eukaryotic organisms. Remember, huh? Kindly remember. The fungus are basically multicellular eukaryotic organism. They are having a definite cellular. But there is an exception. If we talk about eukaryotic multicellular fungi, there is an exception. The exception is your Saccharomyces cerevisiae, that is called as your yeast. Yeast, the Baker cyst, brewer cyst, that is a unicellular fungus. That is not multicellular, that is a unicellular fungus. And the bacteria, the archaebacteria, the eubacteria, the gram positive bacteria, the gram negative bacteria, they all are prokaryotes. They all are unicellular and they all belong to kingdom Monera. So age of fungus mane hegale, age of bacteria mane hegale, they act as decomposers. These are the cleaning crew. These are basically the cleaning crew of first segment. Amar jo plant segment is the cleaning crew sabre mane काम करछन्दी. Amar jo आखो पाको area को एमान सफा रखछन्दी. को माने ना fungus माने bacteria माने. The secret digestive enzyme that break down detritus into simple inorganic material, which are basically absorbed by them, and thus they get energy and nutrients. Energy pile, nutrient pile. You can see in the picture the Pseudomonas. Pseudomonas is a decomposer bacterium.
Can you see Pseudomonas? It's a decomposer bacterium. You have a bacteria that decompose kari parchi. So in mushroom, the Agaricus bisporus, that we khauche button mushroom, or decomposer fungus. Because what se ko jaga grow kariba, wood log re grow kariba, soil re grow kariba, sandy soil, wood log se gala, ba be kobato, kantho, এই জায়গায় moist environment, shaded place রে, damp place রে এই জায়গায় সবাই grow করিবে and decomposing food due to fungus. So খাইবাটা যে ফিম্পি মারি যে fruits of fungus এই যে ডিকম্পোজ করছে ফুড जो न्यूट्रिएंट माने अछंदी ताको समय जे डिकम्पोज करके भांगे की बायोअवेलेबल फॉर्मेट और डिवाइड करछंदी. Now you can see in the energy flow a pathway in an aquatic ecosystem. GFC is the major conduit for energy flow. The energy flow the major conduit के है GFC. What is GFC? The grazing fortune. The DFC start होची once the organism dies. So organism मरिगला परे then DFC start होगा. But GFC का कहिबा in the aquatic ecosystem, GFC is the major conduit for energy flow. In a terrestrial ecosystem, a much amount of the energy flows through the DFC than through GFC. Yes or no? Terrestrial ecosystem. One more question. Factual question. A factual question in a terrestrial ecosystem, a much amount of energy flow through the DFC than through the GFC. DFC দ্বারা অধিক যাଉଛି না কি GFC দ্বারা এটা ଗୋଟେ conceptual question ହେଇପାରିବ factual question ହେଇପାରିବ you have to remember this. DFC may be connected with GFC at some levels, but some organisms of DFC are prey to the GFC animals. So DFC ର କିଛି organism ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କଣ ହେଇପାରିବେ they are prey. Prey means ବୁଝିପାରୁଛଟି prey ମାନେ ହେଲା ଶିକାର. Predator is someone who is doing the ଶିକାର. Predator ଯେ predation କରୁଛି ଗୋଟେ organism depend କରୁଛି ତାକୁ harm ପହଞ୍ଚୁଛି ତାକୁ kill କରୁଛି that is called predator. ଆଉ predator ଯାହାକୁ kill କରୁଛି that is called as the prey. ଯେମିତି in the parasitism interaction ତମେ କଣ ଦେଖିଛ parasitism part ରେ कि someone is there who is a parasite and someone is there who is called as the host. Parasite जो ଅଛି ସେ host ଉପରେ depend କରୁଛି ତାଠୁ nutrient ପାଇବା ପାଇଁ କି energy ପାଇବା ପାଇଁ କି food consume କରିବା ପାଇଁ କି ସେମିତି in the predation category the predator is here ଯେ ସିଏ ତାର prey ଉପରେ depend କରୁଛି like for an eagle the snake python is on prey, the rat is a prey, the frog is a prey, the wolf is a prey. The eagle କାହାକୁ ବି ଖାଇ ପାରିବ ସେ thrush କୁ ଖାଇ ପାରିବ ସେ dragon fly କୁ ଖାଇ ପାରିବ ସେ grass ଉପରକୁ ଖାଇ ପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇ ପାରିବ ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେ ବଟ୍ ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ ପାଇଁ କି ପ୍ରେ କିଏ ହବ ସ୍ନେକ୍ ପାଇଁ ପ୍ରେ ହେଲା ତା rat ସେ rat କୁ ଖାଉଛି ବିଶ୍ୱ ସେ rat କୁ ଖାଇ ପାରିବ ସ୍ନେକ୍ ଆଉ କାହାକୁ ଖାଇବ ନା ସ୍ନେକ୍ wolf ଯେ ସ୍ନେକ୍ କୁ କାମୁଡି ପାରିବ ମାରି ପାରିବ frog କୁ ଖାଇ ପାରିବ ସ୍ନେକ୍ ଯୋଉ ଅଛି it can eat the rat it can eat the frog ते मानस आंख भीतर इंटरकनेक्टेड ହେଇକି ଅଛନ୍ତି बट तो मार्क करि पारे सबले एनर्जी जाउची कोठु बेनिफिट एनर्जी जाउची को जगह ना हमर कॉर्न रो हे गला फ्लावरिंग प्लांट रो हे गला लैवेंडर्स रो हे गला नले मैंगोज रो हे गला एंड ऑल दिस थिंग whether it is a mango whether it is lavender flower whether it is a flowering plant angiosperm or it is a corn monocot plant ये समस्त होचंदी गोटे प्लांट रे एग्जांपल तो एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी हमर कोड स्टार्ट होची plant to start with the primary productivity strategy. The DFC may be connected with GFC at some levels. Some organisms of the DFC are prey to the GFC animals and animals like cockroaches, animal like crow, animal like humans, etc. are omnivores. I mean, what are omnivores? We can eat directly plants or we can eat the um, primary consumer of the plant like the goat, like the fish, like the sheep. And such interconnections of food chains are called as food. The food chain man आपस से connect है that is called as food. तो difference मन रखियो difference between food chain and food web पिला माने common रखिबो food chain जो होची ये तो होची हमर normal theoretically possible but food web जो part अछि it is practically possible. तो atmosphere एमती नहीं कि घास खाली झिंटिका खाइबो झिंटिका खाली बेंग खाइबो झिंटिका को के खाइ परबो मुसा भी खाइ परियो मुसा भी तो खाइ दे परियो ताको बेंग भी खाउछ अच्छा सापो जो अछि खाली मुसा खाइ बोली ग्यारंटी नहीं द स्नेक कैन ईट अ रैट द स्नेक कैन ईट अ फ्रॉग स्नेक आको भी खाइ परियो क्लियर now you see energy flow हमर केमती होची energy flow rule कोन अछि a specific energy flow मन रखियो it is the heart of this chapter. The question you are going to expect in your annual higher secondary education or in the NEET entrance examination is going to ask from this directly from this segment. This is the heart of this part. Please be conscious, please be focused. Those participants who are still here,
ए क्लास रे सेमाना पई केटा गोटे रिक्वेस्ट कि तुम माने जिंस टी भलसे मन रख जानो कि एनर्जी फ्लो जो पार्टी हो जी नीड टू रिमेंबर दिस सेगमेंट इट गोटे इंपोर्टेंट पार्ट अछि a specific place of organisms in the food chain is known as the trophic level clear तो ये जो एनर्जी लेवल जो अच्छी फूड चेन जो जगह प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल दैट इज कॉल्ड सोपान जेमति हमें टैक्सोनॉमिकल हायरार्की देखिथिले पिला माने द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम देखिथिले कि सबुड तळे लोएस्ट टैक्सर के थिला लोएस्ट टैक्सर थिला नंबर 1 इज योर स्पीसीज तापर गले जीनस तापर आसले फैमिली तापर आसिला क्लास ऑर्डर देन फाइलम और डिवीजन देन किंगडम तो जेमती पार्टी आसला सेमती एठी हम डिफरेंट डिफरेंट टैक्स अछि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेवल अछि टॉपिक लेवल 1 टॉपिक लेवल 2 टॉपिक लेवल 3 टॉपिक लेवल 4 मन रखिबो 4 अदर टॉपिक लेवल रही पारे नै 3 टू 4 मैक्सिमम जो काहे कि ना आ पछे रीजन अछि कोन एनर्जी फ्लो रे कांसेप्ट काहे कि ना जो एनर्जी फ्लो जो पिला माने होची दैट इज ओनली यूनि डायरेक्शनल गोटे डायरेक्शन में जाई परिबो अ ग्रास कैन बी इटेन बाय अ काउ but the cow cannot be eaten by the grass. Remember, a sheep or a giraffe or a deer or a goat can be eaten by a lion, but a lion cannot be eaten by any one of them, like a cow, like a deer, like a sheep, like a goat, like a giraffe. They cannot eat a lion. Lion can eat them, but they cannot eat the lion back. So that's why it is called as the energy flow is always unidirectional. So the pyramid of energy is always upright. You need to remember this segment. These are very genuine questions. They are very basic questions, and these kind of questions are going to ask in your examination point of view. This is important. Then the first topic level the plant actually phytoplankton, grass, trees, etc. These are the primary producers. The second topic level, the herbivores, the zooplankton, the grasshopper, the cow, etc. In the secondary consumer, the third topic level, the carnivores as birds, fishes, wolves, etc. And the fourth topic level, the man, the lion, the top carnivore as well. So, topic level first, the plants, the producer. Topic level second, the primary consumer or the herbivores. Topic level third, the secondary consumer or the carnivores. And the topic level fourth, the top carnivores, the tertiary consumer. So it मन रखिबा it is confusing question को पार्ट आसीबा ना primary consumer is present at the second topic level. तो primary माने 1 लिखि देबनी primary माने 2 second consumer level. Secondary consumer third topic level. ମାନେ ଆଗ क्या आसिला producer then क्या आसिला primary consumer then आसे secondary consumer topic level ହେଲା 1 2 and 3 the tertiary consumer the fourth topic level ये पार्ट रा मन रखियो because this part are very factual questions and 80 confusion question भूलभाल हे पारियो तम tertiary माने 3 भाबियो tertiary माने 4 एटी tertiary consumer रे अछि the position होची 4th secondary consumer अछि the position is third ये पार्ट you need to remember और ये हर्बिवोर किए हबो कार्निवोर किए हबो ताको जे कोन रिलेशनशिप अछि ये पार्ट को फोकस करियो now we see here is the flow chart here is the pie chart client completely देखो के का होची energy flow through a different tropic level you can see over here different tropic level केमते energy flow होची students for Salifur Higher Secondary School students for KCP Higher Secondary School KCPur you can ask your doubt in the chat box or you can simply unmute yourself and ask the questions if you want to ask. So, पिलाମାନେ you can see sun is the ultimate source of energy. Sun good energy पाई के हमें जाऊँ चिका first topic level that is the producer that are the plants. Plants को जाऊँ चिका आपका second topic level primary consumer that is the herbivores. जो caterpillar रहेगा जो grass eater रहेगा. Third से कहाँ पाको जाऊँ तो third topic level the consumer the carnivores here is can see house पेयर जो बड़े घर चटिया टी अच्छी कहाँ खाइबो caterpillar खाइबो and number 4 ଆସିଲା four traffic level tertiary consumer रे क्या ଆସିଲା ना top carnivores the vulture the eagle ସେମାନେ ଆସିଲେ again ଏଇ जो plant को
आमर को माने एमे खाई परिबे ना ए जो पाखा पाखी डिरेक्टर से ऑर्गेनिज्म बनले से माने खाई परिबे ए जो प्लांट को ईट कर परिबे माने डिकम्पोजर अगेन से कैटरपिलर को डिकम्पोज के कर परिबे ना ए डिकम्पोजर माने कर परिबे नले ए जो हाउस प्लेयर अछि ताको भी डिकम्पोज कर परिबे ए माने जो हम डिकम्पोजर माने रहले एंड लास्ट वॉल्चर से माने खाई परिबे देन तो डिकम्पोजर जे सबुट उपाय रहला पर जब मोटे फूड चेन देखिबे तले सन रो एनर्जी जाउछ कोटे एनर्जी फ्लो केमते होजे सन टू green plants to primary consumer to secondary consumer, tertiary consumer, and then to the decomposers. The decomposer can directly get the energy from the plant or from the primary consumer or from the secondary consumer or from the tertiary consumer. This is the segment you need to remember. Now you can see in this part, the amount of energy decreases at successive trophic levels. Then an organism dies. You can see in the previous slide. Sabuthi किसी ना किसी जिनसे loss which in the form of heat. Here the energy is not 100% passed on to the second level because 90% of energy is lost at the part called as heat. Again, out of this 100% energy, not exactly 100% will pass on to the next segment. 90% will loss and only 10% of energy is being consumed by this plant. That's why house sparrow has to eat a lots and lot of caterpillar to get the required energy. Then I cannot survive by eating one piece of grain. ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ବା ଗୋଟିଏ ଧାନ ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବି ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେଠୁ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ମୁଁ ପାଇବି only 10% ପାଇବି. That's why I need to consume more. I need to consume excess amount ରେ consume କଲେ ହିଁ ତାକୁ ମୁଁ utilize କରିପାରିବି, otherwise no, I cannot produce energy. Clear? This energy flow different topic level देखिए the amount of energy decreases at successive tropic level. जेटा tropic level बढ़ी बढ़ी जाउछ तम amount of energy decrease ही जाउछ. When an organism dies, organism मरिगला, it becomes dead biomass that is called detritus and it is an energy source for decomposer. से जो decomposer मान रहिले आकबडे energy source से भी काम कर परिबो. And organisms at each tropic level depend on those at the lower tropic level for energy. That is called as dead biomass. So dead biomass बोली कहूचे organisms each tropic level से depend करछन lower tropic level ऊपर depend करछन तांकर energy receive करिबा ପାଇଁ. So again, you can see over the energy flow. The amount of living material in a tropic level at a given time is called a standing crop. One more question, very important question for your entrance point of view or from the HSC annual higher secondary examination point of view, or also in a viva was, practical examination. The external and insulator is going to ask you question. External exam is going to ask this question. The amount of living material in a trophic level at a given time is called as, the answer is standing crop. The standing crop is measured as biomass, that is called as mass of living organisms or the number in a unit area. But a unit area कितने number actually. The biomass of a species is measured in terms of fresh or dry weight. तो हमें कौन सी measure करते हैं? Fresh weight रे और dry weight रे. Dry weight is more accurate. Dry weight is more accurate because it is the exact mass of the body which remains constant. कारण dry weight हमारे constant रहेगा. Clear? तुम एग्जांपल ये देखो, तुम्हें मार्केट रो एजी गाई की धनिया पत्र किणी के आनला. देन तुम्हें 100 ग्राम बा 200 ग्राम रो धनिया पत्र नहीं केसिला. तो इनिशियली से फ्रेश थिला. देन तो धनिया पत्र घर रखि देला. धीरे धीरे से अबिका वाटर टी लूज हो. धनिया पत्र सुखिवा स्टार्ट हो. Then and at the end of 10 days तुम देखियो धनिया जो तुम 100 ग्राम आनथिला it will hardly be like somehow 5 gram to 10 gram हेतियो 90% of water should have lost कर देछि. The dry weight is more accurate because it is the exact mass of the body which remains constant. Clear? The fresh weight तुम believe करि परिबो ना fresh weight fluctuate करिवो. Depend करछि केमिदा कंडीशन से बॉडी छि को एटमॉस्फेयर रे बॉडी छि से जगह एनवायरनमेंट कोन थिला सेटा pH केते थिला से जगह टेंपरेचर कोन थिला ह्यूमिडिटी केते थिला. It depends on each and every part. But if you look at the dry weight, it is more accurate because it is the exact mass of the body which remains constant. The number of tropic levels in GFs is restricted as it follows 10% law. That is called a Lindman's law. 10%. मतलब कि गोटे tropic level रो आगुटे tropic level को जो energy pass on होची that is only and only 10%. 10% pass on हबा. 10,000 किलो जूल रो जब जीव गोटे पार्ट रो गोटे ग्रीन प्लांट 10,000 किलो जूल एनर्जी से प्रोड्यूस करची ताकू खाइला गोटे हर्बिवोरस टे
तापर केते गला ओनली 1000 ही गला तो सर ये तो 10,000 थिला ना 10% जीवो आउ 9,000 लॉस लॉस्ट एज रेस्पिरेशन लॉसेस तक हीट लॉस ही जला देन ए जो 1000 ता पाखु जाईची अगेन अमंग फ्रॉम द 1000 जो किलो कैलोरी 1000 किलो जूल एनर्जी अछि से जो कैटरपिलर बा से जो हर्बिवोरस को जे गोटे कार्निवोरस टी खाइबो द सेकेंडरी कंज्यूमर इट विल गेट ओनली 100 it will get only 100 kilojoule rest 900 part is lost again from the 100 kilojoule ताको गोटे secondary consumer tertiary consumer खाइबो it will get only 10 kilojoule बाकी 90 lost in the respiration. That is a tool that is called a Lindman's law of energy flow. And energy flow is always 10%. Very little amount of energy is passed on from one part to another, and the rest of the energy is lost. So here we come to the end of this part, and here are the 10 questions. So dear participants, whoever are watching right now, you can kindly answer this question in your chat box. I'm waiting for your answer. So here are the questions. The process of energy flow in an ecosystem is called dash dash. If you answer this question, then it's good. We can see this segment. Please put your answer in the chat box. Let me take a quick short break, water break. तब से भी आंसर सब बने स्टार्ट कर दिया. I'm waiting to receive your answer. Please carry on. Yes, dear participants, any queries and answers till now? Suprili Higher Secondary School, KCP Higher Secondary School, Parjang Higher Secondary School, Nupur Sarangi, Anasuya Behera, Sujoini Swai, जो माने लेट जॉइन करछ पिला माने समान अपन गोटे क्विक रिवीजन टाइप रो पार्ट कहि दोची. In today's class we are basically discussing about the
energy flow, the productivity, a pattern पढ़ुଥିଲେ done. This is the second class जहाँ पे समझ पढ़ुଥିଲେ, that is called as energy flow. How does energy is coming from the plant to the animal? A plant's energy code energy comes the plant energy energy हमारा को जगह ना sun is the ultimate source of energy. ये part हमें पढ़ुଥିଲେ. You can take a screenshot if you want to take. Those higher secondary school who have joined lately, like Farjang Higher Secondary School, the Salipur Higher Secondary School, Kurli Higher Secondary School. So my simple suggestion to all of them, it will be beneficiary to you if you take the screenshot of this part and you will take keep this for your preparation. The sun is the only source of energy you all know for all ecosystem except the deep sea, the hydrothermal ecosystem. A part which had on the of the incident solar radiation, the less than 50% is photosynthetic active radiation, that is PAR. The plants and photosynthetic and chemosynthetic bacteria they fix solar radiant energy to make the food. Plants capture only 2 to 10% of the PAR. This energy sustains the living while sustain enough ecosystem with second law of thermodynamics. That means that you need a constant supply of energy to synthesize the molecules and helps to counteract the entropy. Now, the producer, the autotrophs, they are the organisms that synthesize the food in the terrestrial ecosystem. The major producers are herbaceous and woody plants. You can take a screenshot. I'm quickly revising all those things. I've already taught the entire part in today's segment. So those who want to take a screenshot to keep this slide with them, they can do it. The consumer level of the heterotrophs, the primary consumer are the herbivores, the secondary consumers are the primary carnivores, and the tertiary consumers are the secondary carnivores. Two type of food chain is there. One is GFC, second is DFC, grazing food chain and detritus food chain. We've already discussed about them. Grazing food chain, it all starts from the producer, that is the grass, that is the plant. But in detritus food chain, it always begin with the death of an organism. Organism moribo, straight away party start out. Next part, detritus is made of the decomposer, that is saprotrophs, such as fungi and bacteria. They secrete digestive enzymes that break down detritus into simple inorganic material, which are absorbed by them. Thus, they get energy and nutrients. Good editor. In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow, GFC. But terrestrial ecosystem that तमें देखिबा, तले DFC to अधिक energy जिनसा through GFC. The energy flow through the DFC is much more amount than the GFC. Our DFC food web continue which is more practical in nature. Then our data part primary producer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. That at tropic level energy flow केमते हो ecosystem you can see over here. Then dead biomass केमते में भांगुचे केमते देखुचे dead biodetators जहाँ हमें कहूचे. It is an energy source for decomposers. Organisms at each tropic level depend on those at the lower tropic level for energy. The amount of living matter in tropic level at a given time is called a standing crop. It is measured as biomass, that is the mass of living organisms or number in a unit area. Again, the biomass of a species is measured in terms of fresh or dry weight. Like the dry weight is more accurate because it is the exact mass of body which remains constant. And the law of energy to transfer which energy flow, that is the Lindman's law. This is only 10% law. The 10% pass on haba gote part ro gote part ku that other se jai paribo nahi aur baki sab loss is the part of heat. So it's a question which astela. So those who are right now present in the participant list, they can take part and they can answer to this question. According to them, I can guide like if the answer is correct or wrong.
If it is wrong, I can rectify you. If it is right, then I will acknowledge you. Quickly, the process of energy flow in an ecosystem. It is always unidirectional. Yes or no? It is always unidirectional. Why? Why so? Now, according to the according to the 10% law of energy transfer, if the energy available to plant is 10,000 joule, how much energy will be available to secondary consumer? Plant the producer. The producer package 10,000. Producer kuade jibo primary consumer kete gala 1,000. Setu the secondary consumer kete jibo 100. The answer is 100. Answer is this 100 joule. Third, which trophic level has the maximum energy in the food chain? The food chain में maximum energy कहाँ पे रहती है? Whether it is a producer or it is a primary consumer or the secondary consumer or the tertiary consumer. The maximum energy level कहाँ पे रहती है? Food chain ना. It is the producer. Yes or no? पिलाମାନେ answer कौन होगा? It is the 100 joule. It is the producer. जहाँ पे सबसे अधिक energy produce होती है. Maximum energy level. Yes. Any doubt till now? The energy flow and ecosystem follows with sequence. Sequence are कौन ଆସିବ? ଆଗ ଆସିଲେ producer. ଆଗ ଆସିଲେ producer. Producer ପାଖରୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ? Herbivores ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ. Herbivores କିଏ ଖାଇବ? Carnivores. Carnivores ପାଖରୁ କିଏ ଖାଇବ? Decomposers. This is the segment. If the energy at producer level is 1 lakh kilocalorie, 1 lakh kilocalorie, what will be the energy at tertiary consumer level? Tertiary consumer पे कितना रहेगा? According to 10% law. The producer ପାଖରେ ଅଛି 1 lakh, ତାହେଲେ primary consumer ପାଖକୁ କେତିକି ଯିବ? 10% ଯିବ। କେତେଟା 10% କେତେ ହବ? କେତେଟା 10%? Then secondary ପାଖକୁ କେତିକି ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିରୋ କାଟି ଦିଅ। Tertiary ପାଖକୁ କେତେ ଯିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଜିରୋ କାଟି ଦିଅ। Answer is କେତେ? 100 kilocalorie. 10% ଯାଉଛି ନା? Energy producer ରୁ ଯିବ କୁଆଡେ? Primary consumer. Primary consumer ରୁ secondary consumer. Secondary consumer, tertiary consumer. ତିନିଟା step ଅଛି। ତ ତିନିଟା step ପାଇଁ ତିନିଟା ଶୂନ କାଟିଦେଲ। First, second and third. Answer is 100 kilocalorie. Which one of the following statement about energy flow is incorrect? Heat energy flows from sun to producer. It is correct. Energy flow follows 10% rule. Again, it is correct. Energy is lost as heat at rest of below. Again, it is correct. So which one is incorrect? That energy flow is bidirectional. No, it is not bidirectional. It is unidirectional. ये bidirectional no है. ये unidirectional. The answer is incorrect. Well, answer क्या होगा? The incorrect answer is question option number C. Clear? बुझिପାରିଲ? The very simple question, very basic question. Take a screenshot of this. The participants. At the end of the class, I can see more participants are joining, but again, everybody is remain silent. Nobody is answering to my queries and all. So take a screenshot and then we'll quickly move to the next segment of this chapter. Okay.
This is the next segment. Okay, I got a query in the chat box. Finally, I have doubt. Yes, please ask the participants. Please ask. You cannot unmute. I think it's due to some. Let me see and fix it. The participant, I'm always there to help you. The thing is, the pyramid of energy is always what? The pyramid of energy is always upright. Yes or no? The pyramid of energy is always upright because energy flow is unidirectional. Energy flow is what? It is uni. It's very annoying to write through the mouse. But as far as you are not answering to this question or to this queries, I have to do like this only. Because energy flow is unidirectional. The main reason for energy loss during transfer between trophic level is gas. Kaiki loss होता energy level कौन पाई loss हो city? The answer is respiration and heat loss. अब कुछ नहीं कौन सा respiration हो जी heat loss हो जी energy loss जो भी हो जी तार भीतर ही पर होता है ना कुछ point होगा. Yes. An attribute found in plants but in animal is gas. An attribute found in plants but not animals. Your question somehow feels like less of information. Can you please elaborate? You can talk in Hindi. Yes. Yes, I can. I'm very much comfortable in Hindi. तुम हिंदी में जो पूछना है पूछ सकते हो कोई दिक्कत है नहीं इस पे. अगर हम हिंदी में देखें ना फूड चेन द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन गैस. जो एनर्जी हमारा स्टोर होता है खाने में कहाँ पे होता है? Whether it is in herbivores or it in the carnivores or it in the producers or in the decomposers. कहाँ पे होता है ज्यादा खाना? सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे स्टोर होता है? अगर तुम देखोगे ये चीज जो प्रोड्यूस करते हैं उनके पास ज्यादा खाना होगा, जो उसको कंज्यूम करते हैं उनके पास ज्यादा खाना होगा. ऑफ कोर्स द प्रोड्यूसर्स द मैक्सिमम एनर्जी जो रहता है स्टोर होके कहाँ पे रहेगा स्टोर होके? इट इज प्रेजेंट इन द प्रोड्यूसर लेवल. क्लियर? द प्रोड्यूसर क्यों को प्रोड्यूस करते हैं
ये जो हम बोलते हैं ना आलोक लेसन बा जो प्रकाश लेसन जिसको तुम कहते हो हिंदू में, प्रकाश लेसन फोटोसिंथेसिस, वो होने के बाद प्लांट में क्या बनता है, खाना बनता है, फूड बनता है। और उसी फूड में जो ग्लूकोज है वो रेस्पिरेशन में जाके आगे जाके क्या बनाएगा, एटीपी फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी, द मैक्सिमम एनर्जी इज स्टोर्ड इन द प्रोड्यूसर्स, एंड देन प्रोड्यूसर से आगे जाएगा हर्बीवर्स को, हर्बीवर्स से जाएगा कार्निवर्स को, कार्निवर्स से जाएगा डिकम्पोजर्स को। इफ आई से दिस इज नंबर वन, this is number two, this is number three, and the last, this is number four. This is the segment. Clear? Which of the following ecological pyramid is always upright and can never be inverted? Dear participants, ये सवाल जो पूछ रहा है कि कौन सा इकोसिस्टम का कौन सा पिरामिड होगा जो हमेशा अपराइट रहेगा, हमेशा सीधा रहेगा। अपराइट का मतलब ये होता है कि जिसका बेस जो है वो रहेगा ब्रॉड, जिसका एपेक्स जो है वो रहेगा नैरो। यू कैन सी ओवर हियर, तो ये दिस इज कॉल्ड एज अ बेस, इसको तुम बेस कहते हो। डन। और बेस यहाँ पे कैसा है ना, बेस यहाँ पे ब्रॉड है, लेकिन ये जो एपेक्स हो गया इट इज नैरोड। नैरो मतलब ये अभी उसका साइज अभी घटता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो इसको हम बोल डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लेबल होगा, प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर। अगर यहाँ पे है तुम्हारा 10,000 किलो जूल, प्राइमरी प्रोड्यूसर में तुम्हारा है 10,000 किलो। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन बच्चा देखो यहाँ पे, वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो होता है कि कैसे हम उसको डिवाइड करते हैं, प्रोपागेट करते हैं उस पार्ट को। वेजिटेटिव मतलब इट्स काइंड ऑफ असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोडक्शन में आता है, फ्रैगमेंटेशन, प्रोपागेशन, दिस पार्ट से वहां पे रहेगा। तो इस सवाल पहली बात इसका हम आंसर देते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट? द आंसर इज पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये हमारा तुम्हारा अपराइट रहेगा, इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, ये कभी इन्वर्टेड नहीं हो पाएगा, ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा। But is pollination explained are different types? Okay, pollination is something like the transfer of pollen grains from anther to stigma is called as pollination. जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो कि पॉलिनेशन में क्या होता है ना, दो एक फ्लावर है, दो फूल है, एक है जो एक हो गया मेल गैमेट, जिसमें हो गया फीमेल गैमेट। ये जो पॉलिनेशन में क्या होगा ना, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास उसका वो जो अंतर होता है, जो पोलन ग्रेन होता है, वो जाएगा। पोलन ग्रेन का एग्जैक्टली हिंदी में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। पोलन ग्रेन को हिंदी में, उड़िया में कहते हैं पराग रेणु, बट हिंदी में उसको पता नहीं क्या कहते हैं। तो वो वहां से जाएगा कहाँ पे, फ्लावर से जाके पहुंच गए दूसरे फ्लावर में। वहां पे पहुंचने के बाद वहां पे जो स्टिग्मा होगा, द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन, इट विल रिसीव इट, एंड वंस इट विल रिसीव इट, फाइनली उनके बीच में पोलन पेस्टल इंटरेक्शन होके फाइनली वो वहां पे क्या होगा ना, पॉलिनेशन प्रोसेस होगा। डन। So this is all about today's class, today's segment. Thank you for your kind participation, and thank you for your attention. We'll meet again as we have to wind up this segment over here. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट बिलोंग्स टू जेनेटिक्स बेटा। जेनेटिक्स में तुम देखोगे कैसे डिवाइड होने के टाइम पे कैसे वो दो कैरेक्टर डिवाइड होते हैं, सेग्रीगेट करते हैं। द F1 जनरेशन ऑफ MSC मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तुम देखोगे कि तीन थे टॉल, चार को चारों से टॉल थे, लेकिन जो F2 जनरेशन में यहाँ तीन आए टॉल, एक आया ड्वार्फ, तो वहां पे सेग्रीगेट कर गए। द राउंड कैन बी येलो, द राउंड कैन बी ग्रीन, the round can be the yellow, the round can be green, the wrinkle can be yellow, the wrinkle can be green. That is the thing. Okay, so here time off. So thank you for your kind attention, and